I came from the city of Joy, Kolkata. So I have done electrical engineer. So I got interested on this project with Dr. Rathore. So honorary I have joined because he is giving the skill and he is giving the development to others for the skill improvement in this particular sector in renewable energy. So I have joined in this mission. So yeah. Uh, so am I audible to everyone? I think. Yeah. You are audible to me. No issue. Okay. So Dr. Rathore is RE course creator. So and his courses are available in e-learning platform that is Every Engineering. We have collaboration with China-based BSS supplier that is Pytes. Jesse from Pytes will represent their product later on. So our aim is to skill India and impart knowledge to renewable energy industry aspirant. Okay, so Dr. Rathore is going to deliver corporate training. I mean, he's giving at KP Energy Group and shortly going to impart solar training at NTPC. Right now, he is associated with JSW, where he is not only handle project but impart regular training also. He is giving. BSS is a critical part for grid stability, and today is our third webinar on it. I think a few of the participant has already joined. So yeah, we are launching free training session on the coming year, that is 2025 26 Jan for job seeker. Okay, to bridge the gap of skill need in India industry. So yeah, today Dr. Rathore again going to give lots of information about this BESS battery energy storage system. We have running India First RE community where members can attend all the webinar free and get recording free in YouTube. Okay, so this is and yeah, Dr. Rathore, so you can start. I think it is yeah. Now, right Okay. now, you can please take and Okay. please Thank light you. us. Thank you. Priya Suri just joined our vision, the journey. That is the imparting the training and arranging webinars, all these things. So she is also electrical engineer, and it is better. Her really she is taking interest and coordinating the things. So she is just a program coordinator. So all we are also launching other programs also. Just our purpose is to provide trainings basically, skill based training or possibly on job training also we will start very soon. So today Lacey is also with us. She is from Shanghai, China. The company is Pites, which is BESS supply for mainly residential and C&I customers. So I just asked her to brief about the product uh, that is Pites supply. 1 minute. I just then we will discuss that one. Yes, Pites is the company basically. It is Shanghai based BESS supply. Okay. So, Jesse, you can just brief about the company and the product, basically. Okay. Hello, everyone. This is Jessie from Pytes. I'm the sales manager who focus on the Indian market and as well as the East Europe market. We are the manufacturing of LFP batteries. Our company has a history of more than 20 years. We are a supplier for some famous brand like Bosch, Samsung, because we have different business unit. Someone focus on 3C, someone focus on the LEV, the battery module for those e-bikes. We're the top three supplier in Europe market as well as top three in North market. So we focus on this industry. We've been doing this for more than 20 years. We are we deeply
indicated in this industry. Okay, so this is our Pi station, and this is a all-in-one system for medium-sized applications. And one product is 105 kiwi and 232 kiwi hours. So the rating is 0.5 C. And this product has everything you need. You just need to install it because it has PCS, the battery, and also this has liquid cooling system, and also it has integrated EMS, which you can control and configure the system remotely. And also this one has the firefighting system down to the module scale. It has firefighting system for the whole system, but also have firefighting system for each module, each battery module. And this one is a typical application for this type of products. You can connect it to the PV panel from the rooftop, from the diesel generator, and also to the grid. Then you can use uh, this this Pi station to supply for the factories, for banks, for school, hospital, and government. It is a backup supply for you. Okay, this one is our residential solution, and for this one, you if you design your system like mm, from the very first beginning, when we have your consumption and supply, then we can design the system. By doing this, you can get electricity bill from the grid. We have some customer in Poland. He has been on this system for a year, and the grid does not charge him anything. This is off-grid system. You don't have to connect to the grid. Yeah, this is a hybrid system. When you connect to the hybrid system, you have PV panel, you have grid, because sometimes the weather is not so good. By using this system, you're able to get extra electricity when the weather is not good. And this is one application scenario. Another one is that because the electricity price have the peak and valley hours, you can actually use the EMS to set it, or it has some integrated AI system where you can sell the electricity at a very high price, which will like make your payback time shorter. Yeah. Okay, okay. Thank you, Jesse, for briefing all the products from the pipes. Anyone want to take the distribution ship or interested in the products of BESS or whatever in battery, LFP battery, they can directly email to Jesse, or she can be contacted anytime, or you can contact to Prayasri also. Yeah. Now we are discussing uh, what is this particular webinar. BSS I have studied from last, it's my third webinar, but I'm seeing that there are a lot of scope to understand, and still we need to understand this BSS, because we are just talking about grid stability or grid integration, everything, but the safety is also a concern regarding BSS. So that also quality is also another matter, and local manufacturing we are starting, okay, but it will take time. So we are dependent on import right now. That ESO is another thing. What is the BESS? Battery energy storage. Simple. We have to, when our this renewable energy integration is increasing. Means right now the situation is around 46%. We have passed this renewable energy is past 205 gigawatt. Already we have passed. Okay, means we have installed that one. This is I think 46%, and another 53-54% is the fossil fuels, gas and oil. And this scenario will be same because the demand is increasing as well. So in 2047 also the scenario will be 50-50, but by 2070 we are reaching to net zero, means there will be carbon neutrality. Okay, that is our planning. So
Once this RE integration is increasing, the intermittency due to intermittency of wind, because wind is also low, sometime high, and solar is not available in the night. So for continuous uninterrupted power and stable power, FDRE, firm and dispatchable power, round the clock, RTC. Okay, all these things required a storage system. Either we go pumped storage, pumped hydro storage, either we go battery energy storage system, we go with thermal storage, we go other mechanical like flywheel or other storage. Okay, fuel cell, the hydrogen we can do that one. So these are the storage, but majorly the BESS will be used. There will be huge demand, and around you can say 45 gigawatt requirement will be there by 2029-30, that we will discuss. ESO is another energy, just like solar and wind renewable purchase obligation, RPO. Same is the energy storage obligation, which is right now 1.5%, but it will go up to 4%. That is another thing. Now the government is, India is mandating the minimum with start 10% of the installation of solar or wind, whatever capacity you are, either it is hybrid. For example, you are installing 100 megawatt solar, 10 megawatt energy storage system you have to install. That is going very soon, means it is coming very soon. So we have to understand the BESS, its price, and also its safety factors that need to understand. Various component we will discuss, some basics we will understand, battery parameters also we will understand, again review various battery chemistry available, because some are under R&D. Okay, like lithium ion we know, but in lithium ion phosphate, that is also LFP, that is another chemistry which is Pites is expert in that one, but some are under R&D. Tendering inside RFS document is a very big document. I tried uh, to extract some information, but still I think another follow-up this session required. You all who have registered today, they can join free of cost, no issue. But I have more time required in that. Then another penalties incentives, because in the tendering, if you see, if you are installing the battery energy storage system, then in the peak hours you have to supply whatever the committed in the PPA, and same in CUF, whatever the CUF you have committed, that also need to be added. Otherwise, there is a penalty clause. Okay, Indian regulation, BIS, Bureau of Indian Standards. Right now, for UPS or inverter, there are some standards, but because mainly we are importing the this BESS, so the international standard only we are following up. But we will also develop this standard. Safety guidelines, sample BESS cost and payback analysis. Okay, then quiz is there, that we will, that products we have already discussed. That is the Pites product, Shanghai based company. This is the rake basically. This type rake comes. Okay, what in this you can see. Just to understand what is BESS. BESS is this, like simply this is a, you see this PCS is separately compartment. A compartment is separate for PCS. Battery and this battery rack. All you can see that these are the rack. Okay, and battery rack and the fire suppression system. It is necessary, and cooling and ventilation system, HVAC. Okay, liquid cooling is also there. Another cooling is HVAC. That is here it is shown HVAC. Okay, and this is the power conversion system. Means the grid AC is converted to DC, or DC converted to AC. Means there is a rectifier system and as well as converter is there. That is oral PCS. That you can see just for knowing the how it is. Whatever the box we have shown, this is inside that. This is electrical diagram. This is grid side. Transformer is there. There is a breaker. AC contactor means simply you can say breaker. Battery management system is there. Battery, this there is a battery. Okay, the battery management system.
that is there. And this part is totally, this is the PCS converter. This is AC. It is bidirectional inverter. Basically, this is the bidirectional inverter. It converts AC to DC and DC to AC also. Okay, in PCS basically. It also control the reactive power. That is the ancillary services provided by the inverter itself. These are the DC breaker, means power from DC comes from the battery. This is again this one battery management. All this detail goes to EMS, energy management system. This is the CMS, centralized monitoring system. The surge power device at both end, AC and DC end. What we have seen, I am just writing the battery modules and cells. Okay, the core of BESS battery is the measure. 50% cost is the battery right now, lithium-ion battery. But sometime like for India, I think it is coming 70%. Then to monitor the battery, the important factor is state of charge. It is important for the battery life. Health, state of health, SOH, temperature, all these to maintain the battery management system is there that continuously monitor this SOC and SOH, and accordingly the charging discharging is, it send signals to EMS, centralized energy management system. According to the charging discharging decided. Power conversion system convert DC energy from grid, from batteries to AC for grid compatibility and vice versa. Means it's a bidirectional. Rectifier is there which convert DC to this one, AC. Thermal management system, temperature regulation. Energy management system, optimize charging discharging cycle based on demand. And grid, what is the grid requirement? Peak hours, yeah, immediate any demand is there, accordingly the charging discharging is decided, because it also forecasting parameters also collected by the EMS. Accordingly it is decided. Safety system, fire suppression system is there, and ventilation is also there, because batteries are there, gas formation is there, so ventilation is also there. And if required, there is a temperature is high, then there is ventilation system. HVAC means heating is also required sometime. There are some locations where heating is also required. Yeah, we are discussing this again. I am in last webinar also I told you, again repeating. Energy storage obligation, ESO, means your, if any C&I customer or any captive consumer, if using 85 greater than 85% renewable energy only for its captive use, then this ESO is applicable for them. It is already mandated in July 2022. Okay, and this is written like that. By 2023-24 it was 1. By financial means up to March 2025 it will be 1.5, means 0.5% every year it will increase, and it will go up to 4% by 2029-30. That is applicable only for those captive consumers, C&I customer, who are using 85 above the 85% of renewable energy only. Okay, for that this ESO is applicable. Now another mandate is coming very soon, because the RE integration is increasing day by day. So due to this grid stability, it is a need to ensure the ESS should be there. So what government is doing, government of India, they are ensuring that minimum 10% will be installed with the total installed capacity of RE. Means if you are installing hybrid, for example, wind and solar, it comes around 100 megawatt, 10 megawatt, you have to install this ESS. Megawatt is given in the MWS. Minimum 2 hours storage will be there. Otherwise, normally we require 4 to 6 hours. Okay. Accordingly, that will, the capacity can be increased, whatever, like a solar or wind is capacity 100 megawatt, but if you have to install keep 10% ESS, it means you have to install more solar. Okay, that also I will clear today.
So this is the things. So 10% is also coming very soon, or it will go up to 40% in coming years when battery prices. We all know the battery prices is in decreasing day by day. Okay, so when this rises by 2071 will decrease, our local manufacturing in India will start. The cell manufacturing is already started, but by 2027 we will be in that condition. In that it will go up to 40%. 40% is high, very high. You can understand. So ESS will become the part of our solar and wind project. This is just a overview I'm showing. Pump storage, where the water is just stored at elevation in the reservoir through the or these pumps through pumps, or that pumps are run through the wind or solar power only. This is the PSV, pumped hydro storage plant. So what is the scenario right now? You can see. Okay, right now in if we talk in gigawatt hour, this is the requirement. Okay, PSV is more because BESS is battery are very costly, but also there was no awareness, no such integration is done in ESS. But now it will increase by 2031, 32. You can see BESS is increasing to 36.22, and by 2047 1840 is the BESS gigawatt hour, and pump storage will be around 540. These are the major storage. Another storage is the thermal storage, but still in India it is not installed. A BESS, what will be the requirement? Just if we discuss about best case, then 41.6 gigawatt means 208.3 gigawatt hour. How we can understand? 41.6 gigawatt required for how many hours? Simply six around 6 hours. Okay. How we calculate the rated energy means, and VSS rating is always done in kWh or MWh. How it is calculated? I'm just showing so that we can understand. Nominal voltage of BSS OEM is always provide. What is the nominal voltage? VM. Capacity of battery cells ampere hour. Okay, that there may be series of parallel combination. Already we connect in our thermal power plant or in UPS in substation also. We can understand that. Total capacity, cell capacity into number of parallel strings, total voltage, cell voltage into number of series cells. This way, this is calculated. By example, you can understand if 48 volt is there or 100 ampere hour battery is there and four cell connected in parallel, capacity will be 400 ampere, 100 into 4 and 48 is a volt. So rated capacity of BS is 19.2 kWh. This is the way of calculation. Basic terminology in a battery. Are you getting? Hello, are you getting? Just Yes, in yes, chat yes, sir. box. Chat Yes, box, sir. Yes, sir. just Yes, sir. yes, yes. Why Yes, sir. yes? Yes. I want to see that you are understanding it. Good. So basic terminology in a battery. Whenever we will discuss about the battery means especially lithium ion battery, okay, and other chemistry also like lithium ion, lithium phosphate, LFP battery, okay. Round trip efficiency, RT. What is RT? Round trip efficiency means any battery when charge from the grid and then discharge. What efficiency we are getting means whatever the loss of conversion. PCS there is a conversion means AC to DC, then DC to AC. There is a conversion. Or in battery itself there is some idling very less is 0.5% something, but in LFE there is no. I mean, sorry, flow battery there is no idling discharge. So overall, what is the efficiency? It comes. Okay, whatever the energy consumed in charging and what it is delivered during discharging. So that is the difference. That is we can calculate the efficiency. Depth of discharge.
Depth of discharge, any battery at what percentage is get me discharged without losing any efficiency. Means like LFP battery we discussed, Jesse told that in up to 95% or 100% depth of discharge means you can discharge up to 100%. While it is not recommendable, up to 95% is okay, but that is called depth of discharge. Energy density. Yeah, Jesse, you want to say something regarding depth of discharge of LFP battery? I think she is not. Yeah. So energy density. What is the energy density basically? Means per either per liter or per kg, whatever Hello. the. Yeah, yeah. Sir, can you explain once more depth of discharge? Yes, sir. Depth of discharge means any battery is there. It like 100% is the total charging. Okay, 100% is the total charging. That is a parameter. Now, if you are extracting power from the battery, so at what up to what level you can discharge it without losing any efficiency of the battery. So that is like LFE battery. We discussed its efficiency comes. This depth of discharge come up to 90%, 95%, for example. Okay. Understand? Means we can discharge, we can take power up to the 95%, then can you can again discharge. The cycle, charging and discharging cycle is there, but there is no efficiency. But some battery like DOD is, for example, 75%. Then you can, if you discharge it up, below 75%, means, for example, remaining is 25% only, or you are still taking the power from the battery, the efficiency will be lost in that case. Okay, energy Okay, density, yeah. sir, and do we have any values for round trip efficiency? That what should be the value? Let's say for lithium-ion battery, what would be the Don't, RT? this is 80%, 85 to 90%, like that. I am telling this next slide is coming 85 to 95, 90%. LFP Sir, battery is more, DOD is more. sir, depth of discharge, will the round trip efficiency take into account the depth of discharge? Yes, round trip efficiency depend on depth of discharge. If depth of discharge is not maintained, whatever given by the OEM, okay, Hmm. then 101% round trip efficiency will be disturbed. Okay, so the more the Charging, depth of charging design. more Like the simply, I give you example. In mobile is also lithium-ion battery. Yeah, when we get the signals notification with 10%, your battery is only 10%. Why? yes. Why this is because it is not recommended to discharge lower than that because the DOD depth of discharge is defined for that battery. That's why we get the signal. Yeah, No, tell me. my question is, does this round trip efficiency will take into account the depth of discharge? This thing. If the depth of discharge is say 80%, and your Okay. round trip efficiency is say 85%, and Yeah. for the other battery, if the depth of discharge is 90%, will the round trip efficiency be more? No, 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 no. It is not so. It is not so. Okay. It's totally its manufacturing, whatever is design or depends on that. What type of chemistry we are using. There is no such interrelation between these two Okay. parameters. All right. Thank No, you, sir. sir. Actually, what I understand, what he's saying कि suppose if any battery having the same configuration with the depth of discharge is 85% and the round trip efficiency is X percent. And for the same type of battery, if the depth of discharge is 90%, then is it that the round trip efficiency will be more for that battery? This is what I understand he was asking. Yes, I think Mr. Pandey, you are right. Yeah, yeah. There is no such correlation. Okay, there is no such correlation. But whatever the depth of discharge is defined by the OEM, if it is a this is discharging, especially depth of discharge is discharging only. It is done more than that one. Then only the life of the battery will be reduced. But efficiency, there is no such matter.
Okay. But Thank you. There sir, is, if yeah. sir, actually, what I was thinking, sir, ki suppose if depth of discharge is high, then for the same battery, I think it is possible that round trip efficiency should be more. Is I it not? mean, it may not be, it cannot be more. Simply, it cannot be more. Because same type chemistry you are telling the same type of chemistry, battery chemistry is there. Like if you are discussing for LFP, Correct, okay. sir. So for LFP, it is not possible that around RT is more. And also, it depend. RT is depend on the PCS also, the conversion, how the cooling we are maintaining, the conversion loss is also the part of RT. In round trip efficiency, there is a conversion factor is also there. Na? मतलब Uh, सभी कॉन्फ़िगरेशन को भी कंसीडर कर लें इफ वी कंसीडर एवरीथिंग लाइक ईएमएस पावर कन्वर्जन देयर अप टू द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन बाय Mhm. ऑक्सिलरी कंजप्शन अगर सभी को इंक्लूड कर लें इवन दो इफ देयर इज डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इज x%, सपोज 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है उसका राउंड ट्रिप एफिशिएंसी आ रहा है 95%। उसी बैटरी का इफ वी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इज ओईएम सेइंग कि इसका 90% होगा, देन आई थिंक द राउंड ट्रिप एफिशिएंसी शुड बी मोर फॉर दैट बैटरी फॉर नहीं नहीं सेम वो कॉन्फ़िगरेशन। uh, can I whatever. say something about that? Yes, yes, बोलिए. एक्चुअली मैंने टेंडर में देखा था, इफ यू ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हिंदी, रिसेंट आपको सेकंड टेंडर में आपने देखा होगा कि राउंड ट्रिप एफिशिएंसी विल बी 85%। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आप डिस्चार्जिंग कर रहे हो, ग्रिड कर रहे हो ना, तो डिस्चार्जिंग के समय में आप पूरी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर सकते 100% को, लेकिन जब आप चार्ज कर रहे हो बैटरी को, तो ये आपको ये शो करेगा कि सपोज अगर आपने 100 यूनिट चार्जिंग के लिए लिया है ना, तो आपको 85 टू 90% ही आप आउटपुट ले सकते हो, क्योंकि बीच में कैलकुलेशंस लॉसेस होगी, सपोज करो एसी लॉसेस होगी, डीसी से आप कन्वर्ट करोगे वो पीसीएस में, वही उसमें लॉसेस होगी। तो वो तो वो बात. डिपेंड करता है कि ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितने बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हो। तो वो एक only टेंडर मैं मैंने देखा था। it will impact the, you are right, it will impact the life of the battery only. लाइफ ऑफ द बैटरी को इम्पेक्ट करेगा ये. और यस सर। इट इज क्लियर और नॉट? मीन सर आप कहना चाहते हैं कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इज डायरेक्टली रेलेवेंट विद द लाइफ ऑफ द बैटरी और लाइफ 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 मेनली लाइफ? विद द लाइफ, और लाइफ है तो Uh, एफिशिएंसी भी आ ही जाएगा ना, अल्टीमेटली the, इम्पेक्ट तो पड़ेगा. Efficiency, I, वी around कैन trip I नॉट. think efficiency is depend upon the what we call the efficiency, the losses and the in the system. And कॉन्फ़िगरेशन। depth of discharge is different thing, and round trip efficiency is a different thing. I think depth of discharge will decide on the capacity you have to put up for a given project. The more the depth of discharge is more, then In your next slide, wait for in next slide I have taken the comparative sheet so that it will be clear more. Okay, let's see that slide first. So 1 minute. Yeah. Same the energy density, another is the power density. There is a difference. What is the energy density? Means what the battery is delivering per liter, watt hour per liter, yeah, per kilogram. That is the energy density. And what is the power density? Consuming when it is charging. At that time, how much power it is taking. That is the difference between energy density and power density. State of charge. Again, state of charge means at what percentage it is charged. 100% is a total criteria. So state of charge is the measure parameter of a battery, lithium ion especially, where we have to see that if 80% charge, state of charge is there, it means if we have to charge it to up to 100% or means fully charged, continuously charging, it is also we assume no, means we should not charge the leftover mobile continuously. Same thing in that, because in mobile also it is lithium ion battery. The same we have to see through the battery management system. Self discharge rate, if it is idle, then what is the self? It's come very less. In lithium ion it is only 0.5 to 1%. Temperature, operating range, C rate, charging, discharging. If 100% is the overall range, then what is the C rate of the battery? At what percentage it is charging or it is discharging? Yeah.
whatever your confusion will be clear here. Round trip efficiency, the ratio of energy output to energy input during a full charging discharging cycle. Minimum one cycle is assumed to be in the SECI tenders also. At least one charging discharging per day will happen. Lithium ion में 85 to 95% is the round trip efficiency. Flow battery is 60 to 80%. Depth of discharge, the percentage of the battery's capacity used during a cycle. Okay, the percentage of battery's capacity used during a cycle means during a charging and discharging. At what percentage battery capacity used? Will discharging is simply whatever the charging you have done, then what how at what percentage you have discharged. That is called depth of discharge. Cycle life. The number of charge discharge cycles a battery. I think this calculation and the percentage of battery's capacity, this is I think wrong calculation. What I have said, that is okay. At what percentage we can discharge the battery? That is the depth of discharge. Cycle life. How many cycles we can charging discharging? One cycle we have assumed per day. So you can assume what are the life of this battery. 1,000, 10,000 cycles. Flow battery 10,000 plus cycles. Energy density, what I said, the amount of energy battery can store per unit of volume. Okay, the store battery. Lithium ion 150 to 300 watt hour per kg. Flow battery 20 to 50, it is less. Power density, the amount of power a battery can deliver. Okay. State of charge, the current charge level of a battery. Expressed as a percentage is total capacity is 100%. At what percentage is charged? Self discharge at 1 to 2%. I told already. Lithium ion idling in case of idling. Temperature operating range minus 20 to 60 degrees centigrade. C rate, the rate of which the battery charge and discharge relative to its total capacity. These are the various battery chemistry. Just for your understanding, lithium ion right now what is the status? Commercial. Lithium iron phosphate LFP. LFP battery is very cheap right now. Commercial. Energy density 100 to 150. Cycle life. Sir, so Yes. just one thing, for energy density, so what I understand, let's say my battery weight is, if 10 kg, then the amount of energy it can store is around 250 watt hour for 2500 watt hour. Okay. So no, no. Uh, So this per kg, what does it mean per kg? It's the weight of the battery you are saying, or it's the chemical that is chemical, inside? chemical, chemical. Okay, okay. It's a chemical Uh, that, so per yeah. kg chemical of lithium ion can store up to this. Okay, Yeah, understood. liter. Liter is also volumetric. We are considering liter, or either it we convert in the kg as per the density. Okay, so it is the electrolyte what we are using in that. And for power, and for power density was, what is it? Power density means amount of Power is power the you can store. amount of power a battery can deliver per unit of volume or per weight per while unit of discharging. uh, power deliver. Means Okay, one thing power. is the power taking. One thing is the power taking from the grid during charging. Okay, charging cycle. And second is the deliver. When one cycle we have assumed per day means charging how much power it can store in that one. Okay, After storing during discharging, how it can deliver, how much it can deliver per how many watt per kg, watt hour. This is watt hour basically. okay, Okay. understand. Yeah. Will this not be the same, the capturing and No, no, loss is there, na, always. Always loss is there. okay. This is called the RT, na? Round trip efficiency is that one only. If you are whatever the kWh you are giving any battery during charging and during discharging, how many it is delivering. So there is a difference. 100% it cannot deliver. So that is the RT, round trip efficiency. You go there, means charging and then come back, discharging. So in that case, what is the efficiency? That's why lithium ion it is coming 85 to 95%. Means there is a 5% loss is there. Or or flow batteries it is 60 to 80%. 20% loss is there.
These are the lithium ion phosphate, another chemistry, nickel manganese NMC. It is also in the different ratio. Nickel, manganese, and cobalt. Cobalt is costly, so this ratio is also reduced. 800, 11 like that. Okay, there are combination are there. This is also commercial cost you can see in Indian rupees, 18,000 to 28,000 NMC. Sir, And this cost numbers what you have given is for the only the battery or including all the. battery. No, no, no. Only battery, sir. This is only battery. So what would be the cost, other percentage of cost for the other things? Sir, there is a battery management system is there. There is a fire suppression system is there. PCS power conversion system is there, and then the EMS is there. EMS. enclosure is there. That cost comes around 45,000, 45 to 50,000 per kWh in India right now. Apart from this 12 to 20,000 rupees. Yes, yeah. This is only battery cost. So Battery total management. system cost will be around, say, if you take 12,000, it will be around 57,000 per 50, kWh. 50, yes, 55, 50,000 right now in India it is coming. If you import from China, then maybe or you are purchasing high more capacity like 2000 MWH or 4000 MWH, then it may be cheap. But this is the average cost coming right now in India. 15,000 is right now the cost. 15 to 18,000 also. So this is to what capacity, sir? What capacities we are looking at? This one? This calculation. No. The cost, is this in megawatt hours or in kilowatt hours? No, no, this is in kilowatt hours. KWH. Yeah, the 55,000 capacity Indian is. rupees. It is KWH. If you So, are purchasing 1 MWH means 1000 KWH means the cost you can see. What will be the cost? okay, Right now thank it you. is costly. Yeah. And for example, 1 megawatt and 2 MWH means there is a 2 hours backup storage is there. We are considering right now either 2 hours or 4 hours backup. Like if 50 megawatt means 200 MW, 50 megawatt means 200 MWH is the storage requirement. Means 4 hours backup storage is there. Like that. This is the efficiency, lithium ion, highest efficiency 90 to 95 temperature range also we can see. Then lithium ion phosphate, another chemistry. Okay, 90 to 95, same efficiency, but cycle, this cycle you can say reduced. Then nickel NMC, NMC is also good. Sodium ion R&D, flow batteries R&D, lead acid already commercial, but now it will obsolete very soon. Right now in inverter we are using. Its efficiencies are also very less, 70 to 85%. Solid state battery, it is also under R&D. You can see energy density is very high, 300 to 500, the solid state battery. That's why this R&D is going on this chemistry. And for this, India is also for this chemistry R&D or production, production line incentive is there for this. Grid storage, mainly used in grid storage, you can say. So the focus will be LFP and this one, solid state batteries, R&D. And sodium ion also, another thing, sodium ion, 100 to 150 energy density. Now, we are discussing the typical safety hierarchy of BSS. BSS may you can see the cell, first are the cell becomes a module, then rack, then the overall system. So in a cell, there is a cell chemistry, cell vent, separator material, cell design. These are the factors basically we are contributing for the safety of a BSS system. So in a rake itself, overall system is there. First comes in the battery, there is a cell. So cell chemistry, what is the chemistry we use? Cell vent, separator material, cell design, electrode engine, quality control during cell manufacturing. If we talk about a module, after combining this cell, the module becomes the slab BMS battery management system, how it works, enclosure design, which is enclosed, all batteries are enclosed, thermal management, HVAC, fluid, liquid cooling, how we are managing, fire suppression system. It depends on rake, overall rake we are using,
master VMS, enclosure design, redundant sensing, all these factors. Overall system, we can say system BMM overall. Local monitoring. This is only for battery, no, basically. Local monitoring sensor, ventilation, cooling, protection, fire suppression system. All these are the factors basically. Failure analysis. Whatever the last it is observed, I am just showing you so that we can know. Na, BSS we are talking, it's not easy. We have to understand its safety features also. Cooling, charging, SOC to understand charging, discharging, because the demand is very, grid is stability is also, if grid is fluctuating, how the ESS will respond, BSS will respond, frequency regulation, voltage regulation, there are many things. You can see here, 0 to 1 year failure, black 35%. Okay, BSS failure analysis. This is observed in last 4 5 This years. failure is for all over world or only for All India, over sir? world. अरे इंडिया तो अभी Okay. चालू ही नहीं हुआ. We are just starting. चालू तो है ना सर, ये टेंडर वाला तो There ये there is आपको where जनसून वाले sun में is देता है ना. where sun is not available or very less. A remote for DR distribution renewable energy in out USA, Europe countries they are using mainly. Okay, sir. Yeah, it is just showing that you can understand what are the 51% is operation. During operation, this accident occurred. You can see in this 51% when it was in operation. Okay. Pre-commissioning testing duration, 11% failure. So it is very risky also. We need to understand this one because during commissioning also 11%, pre-commissioning and testing during 11% failure rate is there. That we need to understand. Okay. Means you just observe once years are engaging 6 to 7 years, then failure rate is very less. Means initially there is a high failure rate. What this diagram is showing. Causes of cell failure, battery cell basically. External heating, thermal, overcharging, state of charge, monitoring of state of charge is very important. Over discharge, external short circuit, nail penetration mechanical, crush mechanical, internal short circuit. These are the things that happens. All heat generates gas release, elevate cell temperature, cell pressure buildup, finally non-energetic failure mode, high heat dissipation, cell venting, and then thermal runaway with fire and explosion. This is a total sequence it is on. How there is a fire in a cell, how the situation created, how it is elevated, and how it goes up to thermal runaway and then fire. Quality issues. CA report 2024, latest report. Electrode manufacturing 10%. Okay, cell assembly around 10 12%. Cell finishing. These are the quality issues still coming in India. Distribution all BSS quality findings. So that you can understand still we have to lot of work needed in this quality improvement also. Its safety features. Still we don't have a exclusive standard for BSS in India. We are just following only our inverter or UPS, whatever the Bureau of Indian standard is only for that one only. For pure VSS, there is no Indian standard developed as on date. We are just following the international standard. Okay, self-softening and these you can see module in the 23% and overall system failure, balance of system, enclosure failure is also there. Performance test system 48%. Quality issues they are basically. Key components of SECI BSS tenders. When we are participating in the tenders, what are the key parameters? What capacity requirements, technology specification, we have to collaborate with someone for technology, what type of technology, solar and photovoltaic also, because they are not bounding. In the BSS tender, no one is bounding you what type of technology you are using. You can use, but only you have to follow the regulatory norms, regulatory and whatever the statutory norms is there.
and other as per RFS document, what are the technical and financial requirement that need to fulfill. They are least bothered with what technology you are using. You can use any technology, but overall the whatever the peak hours you have to deliver that kWh, whatever the energy you have to deliver at that time, that to be developed. Otherwise, there is a penalty clause. Same in CUF, capacity utilization factor. That is also a penalty. Project scope and deliverables, key highlights of RFS documents, request for selection document. All details are given there that need to understand. Permitting and regulatory approvals, costing breakdown, capex and opex. Then only you can participate in the tendering process when you will come to know everything. What are the permitting regulatory requirements? What are the project scope? Where you are going to install the project? You can install project at 2, 3 delivery point. Means power irrigation can be done at 2 or 3 point. It is not fixed. If whatever you have means total capacity at single place is not necessary. Delivery point can be 1 or 2 places. No issue. Incentives, government benefits, energy storage obligation, compliance penalties for non-performance. That is important. Selection and eligibility criteria. Action plan or SECI BESS tender participation. Document review. Carefully review the request for selection document for technical, financial, and regulatory requirement. That is much important. Then you need to do partnership with a technology provider like BESS. Where from you are purchasing? Are you importing or are you means just assembling it India itself? Only battery you are purchasing, inverter you are using here itself. So that you need to see, collaborate with Indian or global BESS manufacturing for cost-effective solution. Engage EPC contractor with expertise in large-scale BESS projects. Cost analyze, prepare a detailed financial model, including capex, capital expenditure, opex, operational expenditure, and potential revenue stream. How in energy arbitrage is also there. Like in when the rates are rate of the unit per unit rate are less in the grid, you just at that time you charge your system. Or when rate are high, then you deliver. So that is the energy arbitrage. Okay, you can earn from that one. So that is the revenue streams. We need to understand. Proposal submission. Submit a well documented proposal focusing technical expertise, compliance, and cost effective. Financial and technical bidding is there basically. If this is a sample SECI tender for a 125 megawatt recently came out. 500 MWS standalone battery energy storage system. What are the key detail? Project model, build on operate model means you have to build on and operate. Viability gap funding is there available to support project feasibility. Battery energy storage system, offshore wind, thermal storage, all these techniques or wave energy, they are not the viable. So viability gap funding is there. Green hydrogen also. Bid submission deadline like this one. Bid opening date, financial requirement, document fees one time, non-returnable. Bid processing fees. This is also non-returnable. 20,000 per megawatt or maximum 2 lakh plus GST. है ना? 2 millions, 20 lakhs is the maximum. Unless Sir, money what is deposit. bid? Sir, what is Yes, bid processing fee? I think this is the very high, 20,000 per megawatt, and this is, are you saying that that is non-returnable. non-returnable? Is Yes, it? yes, sir. Yes, sir. It is non-returnable. But it is maximum. There is a ceiling of 20 lakhs plus GST. GST is additional. But like if you are doing, for example, 10 megawatt, then it will become 2 lakh. Okay. Yeah, 100 megawatt you are doing, for example. But if you are going maximum, then it maximum limit is 20 lakhs. Okay. Okay. 20 lakhs is you have to give ultimately. Means you are saying that for 500 megawatt solutions for Kerala project, that is Seki, it will 500 be into 20 lakhs. 20,000. If you do 520,000, how much it is coming?
So 20,000 a lakh. I think this is 1 crore rupees. I think. So it will not go like that. It will limit at 20 lakhs maximum. Okay. Means whatever the requirement is, it will be only 20 lakhs. Not maybe lower, but not higher than 20 lakhs. But it is non-returnable. Okay, okay. And document fee, 50, Non-returnable. yeah. Earnest money deposit, that is just like a bank guarantee, till like 40,000 per MWH. This is returnable, non-returnable. No, Bid no, processing fee. that is a bank guarantee. It is returnable. It is Okay. returnable. It is Sir, returnable. what is the process of bid processing fee? Sorry if you are answerable for that. Actually, this complete detail, what I am doing, this is just a sample. I have taken another example. RFS document total I am reviewing. Some slides I have prepared. Today I will show. Another the follow-up session will be there. In that, for the total complete RFS document only we will study, because it is also use, you can say, scope is there. So we cannot understand Hmm. only in 2 hours. So this is a sample. Another I have started the RFS document and complete another one, 2000 megawatt, 4000 MWH, like that. Okay. So in there I have clarified each and every topic, whatever you are asking. After that, if Okay, any sir. question will be there, we will definitely do. No? Yes, sir. This is Because I have so yeah. much confusion in that for segment document fee, bid Right processing now, fee, which right EMD. now what right now what is your question? I think first of two questions is clear. Means document fee is non-returnable. Okay, there is no questions. Bid processing fee, you said that it will be not more than 20 lakhs for any capacity. Okay, it will be less Yes. than 20 lakhs. Okay, and third one Yes. is bid processing. Yeah, sorry, earnest money This is deposit. also That is non-returnable. That is also non-returnable. Bid processing fee. non-returnable. That sir, EMD is 3 lakhs 41,000. If you calculate for 500, that is will be very huge amount, na? Which one? EMD, earnest money deposit, EMD. Yes. I think this is the sir guarantee fee. If I think I don't know about that because No, no, three it is lakhs also rupees. it is just like a bank guarantee. 3 lakh 41,000 Yes. per MW is the bank guarantee only, just like a bank guarantee. It will be returned. Okay, after Okay. successful, yeah. It is not performance bank guarantee. Performance bank guarantee is different. That is coming here, 8 lakh 52,500 rupees per megawatt hours. That is also, And but what? it is based on the performance. Otherwise, if our system is not performing, means you are given free hand to adopt any technology or whatever. But if you are not performing at that time, means when peak power hour in during the peak hours energy is required, penalty is there, but you are not performing it. Ultimately, this will be forfeited. This performance being guaranteed like that. Yes, yes. If you are saying that Project if you are not doing, I this is come, related to project. EMD is related to during the project basically. okay, after successful winning of the project, then this will be work on that performance Yeah, bank guarantee. Yes, no, this sir. EMD will be returned back. Okay. Thank you. Yeah. Before signing the battery energy storage purchase agreement, performance bank guarantee 8,52,500. No? Now eligibility criteria, net worth. What is the financial criteria basically? Okay. Per MW is 3.1 million. 1 million is 10 lakh. Hello, sir. Yes, sir. Police. Just one question. Just one question. So in heading we have 125 megawatt oblique 500 megawatt system. So so this is 125 megawatt hybrid capacity and 500 megawatt storage capacity. So what does it mean? 125 megawatt oblique 500 megawatt hour standalone battery system. Yeah. Very good question, because a lot of people even still not understanding this one. Okay. Now, this is basically only battery energy standalone battery energy storage system. This one, this tender is standalone battery energy storage system. First of all, okay. Now, 125 megawatt. If you multiply it by 4, then it will come to 500. Okay, Yes. means Yes. the energy storage is
storage capacity is for 4 hours. Understood? Na? Okay. Means it can this system, this BS system will deliver one can deliver 125 megawatt continuously up to 4 hours. This is the meaning. Okay. Okay. I Or understand. you Got can it. say But that the this demand is will be now you 0.25 can C rate. now you can if you reduce the demand 75 megawatt like 125 if you do half, how much will be half? Eight. Around 70, Huh. 60 or 70. है ना? So in that case it will can deliver up to 8 hours Up to 8 hours. Okay. like that. And this for this one for charging or the, whatever you need to install the solar or wind. That is separate thing. Okay. That So is to a charge, standalone. understand. This one is a standalone. This tender is standalone. There is Okay. So no separate tender. Yeah. to charge Uh, this capacity of 500 megawatt hour, or let's say 125 megawatt, we need to store the separate solar and wind plants to operate this. you have to take na battery capacity. You need na 500 MWH. Mm, That battery Because understood. capacity is required. Then no, only Mr. this is Mr. the BSS. Bhagat, This is the Mr. BSS capacity actually Mr. MWH. Bhagat, I think Yes. I just wanted to clarify here. What is 125 megawatt, 500 megawatt hour standalone? It means that the battery system is not, you don't have to put up any solar plant. You can buy the green energy from the grid and then charge this. Yes, So Okay. yes. this You are correct. tender is basically for only a standalone battery system. So you have to just put up a BESS system. The Understood. charging electricity might be given by the SECI itself, or you have to purchase it from there somewhere else. Yeah. Means you have And to deliver in remote places where power is not available. Okay. There Okay. only you have to deliver. Sir, I have one question. Can I ask? Yes, yes, yes. Tell me. Okay, just I have some questions that if I'm finding that there is some certain that one is FDRE, second one is standalone, okay, third one is Mm. solar plus BSS. So can you explain that what is FDRE system, what is RTC system, what is a standalone system, and what is the peak power tender? I'm so confused about that, sir. Please clarify. These are the different types of tenders. FDRE means firm and dispatchable renewable energy. Okay, means like our solar or wind are the intermittent power. Solar is available in daytime, night it is not available. Wind is also vary. Okay, so whatever that in the tender it is clearly defined that you have to farm means whatever we have said. I need 100 megawatt means 100 megawatt. Okay, and dispatchable means whenever I tell you yes, grid tell okay I need 50 megawatt this time, then you dispatch 50 megawatt, and when I ask you 100 megawatt that time, then 100 means whenever I want, then there should be flexibility. Okay, means you need to keep ready your system. If I want 50 farm means whatever I said, if I need 50 megawatt means 50 megawatt, not less than that, and that time whatever the time grid required. Okay, this is the FDRE basically, firm and dispatchable, and RTC round the clock means a time whatever the peak hours time is there, yeah, or 24 hours you can say. It is clear that it is said that you have to round the clock 24 hours. We need this power to be dispatched from your system. That is possible only when you go with solar, wind, or then BSS or whatever energy storage system is there. Okay. The standalone is that you are not connected with the grid. Means there are some remote places are there, or maybe distributed renewable energy where major grid infrastructure is not available. There you can just charge maybe only 11 kV line is there. You can charge this system, and during grid is not available. At that time you provide the power to that remote places, whatever. Okay, sir. That tender 125 by 500.
This is a standalone tender or another thing, sir. Standalone. It is standalone. Yeah, But you were saying that, February, yeah, last but you bid were opening saying date. so. Bid will open in Okay. 7th February 2025. But I think you were saying that if grid not available, then which time will charge the battery if grid is not available, sir? अभी तो इन्होंने जैसे बताया ना कि आप Hmm. ये पावर जो है वो आप अपना खुद का सोलर लगा सकते हो या कहीं से आप ग्रिड से भी ले सकते हो. यू कैन इवन परचेज द पावर आल्सो. ठीक है ना. वो ये चीज है उसको आप चार्ज करके आपको वहां ट्रांसपोर्ट कर. इट विल बिकम एज ए जनरेटर. जो आपका मैं बताया ना बीएसएस जो स्टैंड अलोन है उसको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है. इट विल तीनों काम करता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और एज ए ट्रांसमिशन का भी काम करता है और एक जनरेटर का भी काम करता है. आपकी पावर यहाँ पे आपने चार्ज कर लिया और दूसरी जगह डिलीवर करना वहां जाकर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग आपको एक तरह का वो लाइसेंस लेना पड़ेगा. समझ रहे हो ना. सर सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, लेकिन आप ये देखे होंगे कि जीवनल टेंडर फेज 4 में मैंने ये देखा था कि हम्म. उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया था कि आप अपने बैटरी को जो 500 मेगावाट का था उसे आप ग्रिड से कर सकते हैं जब आपकी पावर की प्राइसिंग कम हो, ओके. आप अच्छा. डिस्चार्ज कब कर सकते हो? हाँ, डिस्चार्ज कब कर सकते हो? इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग मीन 6 AM to 9 AM, और इन द इवनिंग 6 PM to 9 PM. ये मीन्स टाइम ऐसा है बेसिकली ना ये जो सब. सोलर नॉन सोलर टाइमिंग है. दीज आर नॉन सोलर टाइम. जो ओके डे ओके. टाइम इज द सोलर टाइम. एट दैट टाइम यू हैव टू चार्ज योर सिस्टम. और डिस्चार्जिंग टाइम इज अ नॉन सोलर टाइम. मतलब मॉर्निंग का जो बताया 6 to 9 या 10-11 तक मान लो मैक्सिमम. और अच्छा, मतलब जहाँ हम्म, पे ग्रिड अवेलेबल होगा सर वहां तो चार्ज कर सकते हैं ना अपने बीएसएस को? क्यों नहीं कर सकते हैं. वो तो पूरा ये कर आप. सकते हैं ना? हाँ, इसमें बिल्कुल आपका क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया है. फर्दर इसमें और अभी स्टडी करने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं. ठीक है ना. तो जो हम्म. अपना नेक्स्ट सेशन जो होगा ना दैट इज अ फॉलो अप सेशन जो होगा उसमें आप लोग सब मैं बताऊंगा और भी अपन इसमें और डिटेल क्योंकि टोटली टेंडर भी होगा. पूरा जो 3 टाइप के केस हो गए ना. एक तो वन इज द दिस वन विदाउट ए स्टैंड अलोन व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर. हम्म. Yeah, wind is a pure solar, only solar. And another is the solar यस. and wind, both. Hybrid system is there. So what differences are there? Because in case of solar, everyone knows in night there is no solar. Okay. So what will the panel do? They will close the panel, they close it. And in case of wind is also there. यस और सर. कोई थोड़ा म्यूट कर लो. प्रकाश जी को म्यूट करना पड़ेगा. ओके. सर क्योंकि मैंने ये देखा था कि आप जीएसडब्ल्यू भी काफी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है. मैंने भी एनालिसिस किया था. दे आर राइट. participating in so many tender, and I think they have won some tender also. यस यस. Yes sir, वो you can continue sir. हाँ हाँ. नहीं वो करेंगे उसका भी डिटेल में जाएंगे. ठीक है. तो ये नेटवर्क दिस इज द फाइनेंशियल क्राइटेरिया बेसिकली. ओके. द मिनिमम देर आर ग्रुप कंपनी और सेपरेट कंपनी. तो हाउ दैट नीड टू बी कैलकुलेट दैट इज अनदर फैक्टर. नेटवर्क ओके मिनिमम ऑफ 3.14 million पर MWH कोटेड कैपेसिटी. सेम टर्नओवर इज देयर. इट इज आल्सो स्पेसिफाइड per megawatt. And project objective ensure the BS is available for on-demand charging and discharging by purchasing entities. Whoever the purchasing entities, if your purchasing entity is available, this is also free. You can connect at ISTS or within any state also. If purchasing entity is available in same state, you can install this our system means solar or whatever plant there itself. Okay, no need to install in other state. Sir, what is that viability gap funding? Do you have any specific program on this viability gaps funding? So for cell manufacturing, the VGF is there. Okay. Viability gap funding is there for this BESS, but it is for cell manufacturing, means the battery cell.
So what is that meaning of that? There is a Meaning means the cost right now, the raw material, whatever the purchased, means either it is battery or other inverter PCS we can say, or we can say battery management EMS, whatever. So these are mainly not manufactured in India itself. We are based at means dependent on the import. So the costing is high, just like offshore wind, that is also high. Then this solar thermal, that is also high. Wave energy 40 lakhs per megawatt, that is also high. Okay. In thermal storage with CSP with thermal storage, it is coming around 15 crore per megawatt. But if we BSS, it is also very costly. So wherever the projects which are not viable, but because our target is to achieve 500 gigawatt by 2030 and net zero by 2070, we have to approach each available technology in the renewable. Either it is offshore wind, either it is wave energy, either it is with storage, either it is thermal pump storage and battery energy storage system. Okay, so our DCR, domestic content requirement, is also mandated. At the same time, this VGF, viability gap funding, wherever the project is not viable, like in EV also, okay, in EV also it is there. So for that, the government has declared the VGF. Okay, that is just a support for the capital, in the capital capex only, the capital cost basically per megawatt. There is a support. Either it is BESS project, either it is offshore wind, either it is wave energy, either it is new technology, whatever, green hydrogen, you can say. Okay, this is the VGF basically. For BESS also we will discuss, okay, regarding what is the VGF. Bhavani sir, I have one question regarding that. Yeah. Before 1 minute, you were saying that interstate and intrastate. So can you Yes. clarify that thing, sir? That we are coming. Next slide we will discuss that one. Actually, in BESS means once you have participated in the tender, you can connect your total capacity either at ISTS means CTU. Okay, ISTS means CTU, interstate transmission system. So that is the means PGCIL substation. Okay, PGCIL substation, wherever is, you can connect at a CTU, and STU also you can connect. And that is I'm saying, you can connect it S2 also. And if the buying entity means who are purchasing your power from this BESS is available in that state, you can Hmm. install your project there itself. Okay, that Okay. is also in that is also coming that one. And you can this power evacuation can be at two or three delivery point, maybe two or three, whatever. Means you need not to deliver on only at one point. Okay, in Okay, BSS sir. tender, like for example, it is 100 oblique 400 megawatt oblique 400 MWH is there. For example, 50 oblique 200 MWH you are installing at one means grid connectivity you have received. That is your responsibility. Solar, who Hmm. is the developer, he has the responsibility to provide the grid connectivity. Okay, that is not the responsibility of SECI. But at that at one place you can execute that power, and at another delivery point also you can 50% there. You can 40, 50, whatever ratio you can do. But at least one it is requirement wherever the BSS is there, one system should be there, like solar, whatever you are installing. That is in that case where some solar or wind installation is, for example, solar installation is there, plus BS is also there. Then BSS should be there where your system is there. Solar, wherever you are installing the solar, at least BSS should be there, like that. That is ISTS connected. Yes, sir. ISTS is the CTU and another is the interstate, means in the state itself. Interest Interested means Okay, where you are charging means the same thing and discharging the same thing in one Maharashtra, state. Rajasthan.
other Okay. like Gateco is the Gujarat. You can yeah, you can inject power there also means grid connect. You means once you have bid you have won, you have to plan. Okay, earlier you have to plan, but you can plan earlier also. Means if you can check the delivery point also later on stage also. So you have to discuss with there is a power evacuation, the connectivity available in Gateco substation. Okay, you can install Hmm. there itself like that. That is called I intrastatements. A one intrastate. That is the intrastate. One is the interstate, other is the intrastate. The intrastate means within state to state. That is connected Okay. with the STU, state transmission utility, like GATECO, RRVPNL, MSETCL, MPPTCL in MP, AP Transco, like that. Okay. Okay. Okay, sir. Clear. Thank you. Okay. Yeah, this is the statutory requirement. Already we have discussed the CIG. Okay, CIG is must. Grid connectivity, that is important. Again, I am telling you, grid connectivity is the responsibility of the developer, not the SECI. Right now, also same in our solar and wind projects, grid connectivity we have to ensure. LDC load dispatch center, that is must. Discom is must. Connectivity agreement and scheduling where we are selling the power. BIS standard, Bureau of Indian Standard, IS 17092. Further slide is there where I will clear all these requirements. One is the safety standard, other is a normal standard. Okay, for regarding the installation or you can the manufacturing related. EI and PCB for safe disposal, because these are the lithium ion or all these nickel, manganese. These are the metal. The proper disposal is also very necessary. Okay, fire safety, fire suppression system, NF National Fire Protection 855, ESO, and Electricity Regulatory Commission, whatever state wise or CERC for central. Cyber security protocol is also there for grid connectivity. For BSS also it is applicable. Battery waste management rules. These are the some statutory requirements. Now SECI tender, I just compared here only with solar or with hybrid, solar plus wind. What differences will come basically? If we discuss in the technology wise, that means in case of solar, you have to install only solar. But in case of hybrid, solar and wind both can be installed. CUF difference will be there because CUF penalty is there. So depend on if you are going with only solar, your tender is only BSS with only solar. It means accordingly the CUF is there. That will the range in the 25 to 27% or maybe less. Accordingly, the penalty clause or incentive will be there. Same in case of solar wind, it will increase. CUF will be 30% to 40%. So that also need to consider. If you are tendering for solar and wind hybrid, at that time that the CUF also you need to manage that one. So accordingly, you have to choose the that site, wind site and solar site. Feasibility also need to confirm accordingly. Interconnection requirement, that is over 220 kV is a normal level for both. Penalties, CUF accordingly shortfall, CUF shortfall, that is a penalty. Scheduling and forecasting, that is also there. In this case, complex scheduling for combined solar wind because wind, you know, na, solar is okay, but wind is very more. So this is complex in case of both solar and wind. ESS utilization, primarily solar charge, limited flexibility for other users, allows mixed charges, solar and wind. Means the ultimately source for charging the ESS, this BESS, battery energy storage, yeah, any energy storage system, there are two options, solar and wind. Means more sources are there. Na? If solar in night, solar is not there, but wind is there, so you can charge the or ESS, energy storage system. Regulatory compliance is the same. This is another thing. Now, just is, understand this one. For example, you have tender or whatever, 1000 megawatt, Sir, 4000 MW is the highest. Bhavani sir, in previous slide, I'm not understanding one point very clearly. That is CUF, capacity utilization factor. Please, sir, explain one more.
Yeah, capacity means in regard to if we discuss about solar, the CUF capacity utilization factor is comes around 18 to 22, 23%, maximum 25% it can go. Okay, so Okay. in that case, if you are tendering or means you are installing the project means battery energy storage system with only solar, in that case, your CUF related penalties, shortfall, CUF shortfall. You have to choose now where you are going to install the state or that the site. You have to choose your technology because you are not bounded on the technology. Technology also the modules and inverter you have to choose. But if the capacity utilization factor, which is average 18 to 22%, maximum 25% comes in the solar, so that is applicable in case of only solar with BSS with solar tender. Okay, only solar tender. Okay. That I am saying. If you are participating in the tender, which are with hybrid solar and wind, in that case, this CUF will increase. Means the range will be 30 to 40%. Okay. Hmm. In that case, your penalties against the CUP shortfalls will be accordingly. That is the thing. Okay, sir. Understood? Understand. Because solar is Yes. available only daytime, na? Yes, sir. Yes, sir. BESS, battery energy storage system will be 1000 megawatt oblique 4000 MWH. Here 4 hours is the storage. Storage is there, 4 hour storage for the 1000 megawatt. Now you just see what will be the capacity wind or you are going with solar wind. So in that case, how much additional capacity you need to install? Loading you can say simply because it is the AC capacity. 1000 megawatts is the AC capacity. In that case, what you have to do? In PV solar efficiency of 20%, what I said, okay, in India, that capacity with the energy needed in MWH daily sun hours into efficiency. Simply calculation capacity 4000 MWH 6 into 0.2. 20% is the efficiency. Means you need to install a system with 3333 megawatt. If you want to uh, this one 4000 MWH if you need to deliver. Okay. In Is that it case, megawatt hour or megawatt? this is megawatt. That is the megawatt hour. 4000 is the megawatt hour means 4 hours energy storage is there. So you mean to say we have to have 1000 3,330 megawatt can be megawatts? delivered in 4 hours. Yeah, means for to get this 4000 MWH battery energy store to charging it one, you need this storage 4000 MWH. For that, for solar only we are discussing. At least this capacity solar PV plant you need to install. That is there. What I am saying. Bhavani sir, why you are assuming efficiency of solar is very less? I think 0.2. It is very less now. No, 20%. Is it 20%? Point two Okay, means okay. 20%. Point two means 20%. Okay. For a compliance with energy obligations and allow for losses and additional capacity buffer of 20 to 20% is often considered. Total installed solar capacity might need to be 3,500 to 4,000 megawatt, depending on the location, efficiency. Any means what type site you are choosing, what are the radiations is there, solar radiations. Okay, that is also important. What type technology you are going to implement, that also depend on that. So all these factors works. Then operation maintenance factor also works. Module cleaning you can say, that is also important. So all these things need to consider, and you are free, you can install any capacity, but the SECI will receive only the power which is contractually means whatever the capacity, like for example it is Sir, I your have a this little one means doubt. that is the other than. Yes sir.
Okay. Now let us look at this 1000 megawatt, 4000 megawatt hour BESS. Okay. So what you are saying is I need to put up 3333 megawatt Yes, for fulfilling this obligation. But I think there is some right, calculation sir. mistake. So if I have a 1000 megawatt solar plant, which means that I can produce for 6 hours 6000 megawatt hour. Is that correct? Pardon, can you repeat, please? See, if I have set up a 1000 megawatt solar No, no, plant, yeah, this is the BESS rating. yeah, yeah, I This is the know. 1000 megawatt. We have to deliver 4000 megawatt hour, right? So how you will deliver? How you will So deliver? I have a 1000 megawatt plant of solar. So my Yeah. charging during this 6 hours, if I have, so Yes. I can get a 6000 megawatt hour of solar power, which I can charge, Okay. right? So Right. if I put up 3333 megawatt, which means that if I have to, I will get energy almost Yes, 3333 into 6, sir. which is like Yes, 18,000 megawatt hour. sir. You are calculating your overall 100% efficiency. I am seeing. No. I'm calculating only for 6 hours. 20% is Please. 6 hours. Sir, 6 hours, it is okay. But what I'm saying, 6 hours you are calculating, but ultimately we are talking about what this 24 hours, na, means our FDRE we are talking about No. means our This is it is, standalone 4 hours. What we are talking is standalone it 4 hours. is not it is not standalone. You are Okay, this connected is with grid. no, Hmm. but my obligation is only 4,000 megawatt, 4 hours, Right, right. right? I So I think think I some think it is. calculation. I think you need to Hmm. look at some calculation problem is Sure, there. sure, sir. Okay. I will see this calculation again or in next follow up our session. Yes. We Yes. will again discuss on that one. Right. Ki, where is the Yes, sir. problem Yes. in the system? But you also take the screenshot of this one and also come with the solution. Okay, where Okay. is the problem? But I think I have calculated annually means Sir, sir, average on sir, basis of इसमें average. sir, Rizwan here. Hmm. But sir, there Hmm. is no mistake in this whatever the slide you have shown. सर Okay. आप फिर से रिपीट करेंगे सर? मैं आपको समझाता हूँ उसमें आपने कहाँ मिस्टेक हाँ, किया है। मैं बताता हूँ फिर आपका सही ये है क्या सर, है। जो मैं भवानी सर हाँ, आपका सही है, नहीं, आपका सही है। ये Rizwan, राइट राइट राइट। Rizwan देखो ji, मैं बताता हूँ, Rizwan एक ji. मिनट में बता रहा हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। देखो ये एक सिंपल अपन ने एग्जांपल लिया है कि 1000 मेगावाट ऑब्लिक 4000 एमडब्ल्यू, मतलब आपको 1000 मेगावाट 4 घंटे का मुझे एनर्जी विथ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मुझे चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का डेफिनेशन है। ये अभी इसमें क्या सोलर लगाना है, कितना क्या लगाना, वो कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो एटलीस्ट 4000 एमडब्ल्यू एनर्जी इज नीडेड डेली, कुल मिला के इसमें ऐसा लिख रहा है। ठीक है, तो अगर अपन सोलर प्लांट डालते हैं तो उसकी एफिशिएंसी में एनुअल एवरेज पकड़ रहा हूँ, 20% कोई डे का नहीं होता। जब ये दिस इज जो सीईओ है वो एवरेज में लिया जाता है, नॉट फॉर ए सिंगल डे या मंथ, इट्स कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस। उसके 20% का कैलकुलेशन किया है, तब रिक्वायर्ड कैपेसिटी जो आई है निकल के एवरेज सन आवर्स 6 घंटे माने और एफिशिएंसी 20% पकड़ी है। ठीक है, अपने इसकी तब जाके 3,333 मेगावाट कुछ कैलकुलेट हुआ था। इतना लगाना पड़ेगा क्या सिस्टम, ये है कैलकुलेशन इसमें सही है, बताओ। आपका सही है सर। सर आप क्या बता रहे थे जो जिनका क्वेश्चन था सर? Yeah, Rizwan ji, हाँ। I think my understanding of this is, हम्म so हम्म if I put 1000 megawatt of solar plant, हम्म assuming I get solar radiation in 6 hours, हम्म so if I run this for 6 hours, I'll get हम्म। 6,000 megawatt hour, and नहीं सर, नहीं, यहाँ पर ये गलती होगी अपन सर। 6,000 आप नहीं गए, यहीं पर गलती होगी। कितना आएगा? वो अराउंड 4,000 के आसपास ही आएगा आपका सर। ठीक है, 4,000 आ रहा है ना? हम्म। तो मेरे को अभी चार्ज करने के लिए वो भी सर 4,000 बस। 4,000 भी मैं कब बताता आएगा हूँ। सर? 4,000 भी कब आएगा?
4000 अगर आपने ट्रैकर वाला प्लांट लगाया है तब जाके आपका 4000 आएगा। अगर ट्रैकर वाला प्लांट नहीं है तो 4000 भी नहीं आएगा, आपका 3000 के नीचे रहेगा। ठीक एक है, चीज और बताऊं कि ये 3000 ले लीजिए। राइट सर। सो मेरा 3000 आ रहा है। सो हम्म 1000, इफ आई पुट 1000 मेगावाट, आई एम गेटिंग 3000 आपके हिसाब से। हम्म So हम्म, if I put 3333 megawatt, I will हम्म। get 12,000, 15,000 megawatt. Correct? नहीं नहीं, एक ठीक है एक पहले तो एक चीज बताता हूँ मैं। So एक but my requirement is only 4,000 megawatt hour for this. हाँ राइट सर, राइट। अभी इसमें क्या हुआ, ये सिर्फ आपने सोलर लगाया, उसके हाँ। बाद सर ने बताया राउंड द ट्रिप कैलकुलेशन जो आएगा, नहीं, ये तो अभी नहीं वो राउंड नहीं सब ट्रिप। भी तो राउंड करना एक पड़ेगा सर। मिनट मैं वो क्लियर करता हूँ अल्टीमेटली उसको। एनर्जी तो यहीं से जा रही है ना, सोलर से एनर्जी जा रही है, तो राउंड ये नहीं, सबसे बड़ी द मेरा ट्रिप एंड एफिशिएंसी एंड आएगा, फिर डेप्थ मेरा ऑफ एंड डिस्चार्ज। रिक्वायरमेंट मेरा एंड रिक्वायरमेंट इज 4,000 मेगावाट आवर एज वो पर सर दिस। आपका एनर्जी मतलब जो आउटपुट नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट है वो लिसन आएगा। लिसन, यस, यस। एक्चुअली लेट मी क्लेरिफाई। पॉइंट इज कि जब आप 3333 मेगावाट का कैपेसिटी का प्लांट लगाएंगे तब आप 4000 मेगावाट आवर डिलीवर कर पाएंगे। यस राइट सर। यस, यही है इसका सारा सार। और हम्म। या बट दूसरा सर दैट मैं इज ये इस जो नॉट पे दैट और इज ये जो नॉट एक्सप्लेन करेक्ट, करूं आई 1000। क्या? थिंक। सर सर ये एक्सप्लेन करूं क्या मैं एक मिनट के लिए? हाँ करो करो चलो। हाँ एक्चुअली रिजवान जी, मेरे को क्या लग रहा है ना, मैं कैलकुलेशंस किया था अभी। ये प्रीवियस स्लाइड में क्या हुआ था कि ये सर बोल रहे थे कि आपको जब सोलर प्लस बीएसएस लगा रहे हो ना, तो ये सोलर से कितना चार्ज करना है ये बात हो रही है। तो आप इसके बारे में क्या था कि सपोज हम्म आपने 3333 मेगावाट का इंस्टॉल किया ना, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि 80% आप उसके यूजेस कर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सपोज करो कि मैंने 3000 मेगावाट का लगाया, उसका 20% अगर आप निकालते हो ना, तो आपको 600 मेगावाट का आपको एनर्जी मिलेगी सोलर से, ये चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप 600 मेगावाट को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आवर से, तो आपका 4000 मेगावाट के आसपास में इसका रिजल्ट आ रहा है। मतलब उसका सोलर का राइट। 80% जो और एनर्जी रहेगी ना, उसे डायरेक्टली हम्म। टाइमिंग में, सोलर टाइमिंग में आप ग्रिड में डायरेक्टली से दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ टीसीएस एंड इन्वर्टर। मेरे को ये समझ में आ रहा है सर। सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही होता है। ये एक्चुअल में थंब हाँ रूल है। क्योंकि वो, और जो इसका ये कैलकुलेशन इसका शीट में दिखाया बेसिकली गया हाँ वो ये है। सही है, एक्चुअली बिल्कुल सही सॉरी, है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि 3333 मेगावाट कैपेसिटी का जब आप प्लांट लगाएंगे तो आप इसकी डिमांड मीट कर पाएंगे जो लिखा है राइट 1000 मेगावाट फॉर 4 आवर्स। राइट राइट। इसमें क्या है, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता क्या होता है, ये जो 1000 मेगावाट लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1000 मेगावाट मुझे लगाना है ऑब्लिक पर। इसको राइट राइट। केवल ये कैलकुलेशन है कि मैं 1000 मेगावाट 4 आवर्स तक डिलीवर कर सकता हूँ। दिस इज द बीएसएस रेटिंग बेसिकली। हम्म इसका यस क्या यस, लगाना है मतलब उससे उसका कोई पीक, लेना देना नहीं। पीक पीक हाँ पीक, वो पीक है। वहाँ पीक मतलब 1000, जो मुझे कहने का मतलब मुझे 1000 आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, और 4 आवर्स का मेरे का एनर्जी स्टोरेज निकल के आ रहा है फॉर एग्जांपल, हाँ। तो मुझे 4 आवर्स के लिए अगर 1000 मेगावाट चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए 4 घंटे कंटिन्यूस हो। तो फिर आप कम रहेगा तो वो बढ़ेगा, तो वो वहां पे अब हम्म, लगाना कितना है वो कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने निकाली है। सही है, सही ये है सर, नहीं क्लियर आपका नहीं है? सर आप कैलकुलेशन सही हो, सही है, सही सर हो, एक सही साइड हो। भवानी आपका सर, सही है। हाँ वन थिंग आई वांटेड टू नो, बेसिकली कोई कंज्यूमर का कोई लोअर या अपर थ्रेशोल्ड भी है क्या कि मिनिमम गारंटीड इतना यूटिलाइज करेंगे, मैक्सिमम गारंटीड इतना यूटिलाइज करेंगे पर डे, या एवरेज 4000 नहीं नहीं, वो मेगावाट आवर इसमें एनर्जी? इसमें बीएसएस टेंडर में आप टेक्नोलॉजी कोई भी यूज ले सकते हो, कोई ऐसा कम ज्यादा का नहीं। बस ये है कि अगर आपने कम किया, जो आपने पीपीए में फाइनल हो गया कि पीक टाइम में आपको इतना देना, वो आगे आ रहा है स्लाइड में आप समझेंगे, तो वहां पर पेनल्टी क्लोज है सिंपल सी। और पीक आवर्स में जितना देना चाहिए उससे कम यूनिट दिया तो वो है सीओ आपका कम रहा उस टाइम, तो भी आपका वो आएगा। तो क्योंकि आप पे छोड़ दिया, टेक्नोलॉजी आपको लैंड आपको लेनी है, आपका ही ग्रिड कनेक्टिविटी भी आपको लेनी, कहाँ जोड़ना चाह रहे हो, किस स्टेट में लगाना चाह रहे हो, वो भी आप पे है, सब कुछ आप पे कर दिया। बट फिक्स कर दिया कि मेरे को इतना चाहिए तो चाहिए। एफडीआरई के अगर टेंडर में देखे या किसमें देखे तो उसको वी हैव टू मीट आउट, तो उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा लगा सकते हैं अपन। लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उतना ही वी कैन डिलीवर इन द ग्रिड, उसके अलावा एक्स्ट्रा आप डिलीवर नहीं कर सकते, ऐसा है। अच्छा, वन मोर पॉइंट, सर ये एक क्वेश्चन है। 1000 मेगावाट 4 घंटे के लिए देना है,
तो इज इट लाइक कंटिन्यूअसली 4 आवर्स या कभी 10 मिनट कभी 1 घंटा करके टोटल? इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ग्रिड डिमांड। मतलब ये एक मैक्सिमम एक सिनेरियो बताया गया है, बट ये हो सकता है सिनेरियो अदरवाइज। ये तो चेंजिंग होता है डिमांड। ESS हैज टू वर्क एज ए बाई डायरेक्शनल, मींस इफ देयर इज ए डिमांड इज देयर वोल्टेज इज लो, ESS will start deliver the BSS will start deliver the power to the grid. And if voltage is high, there is no demand, then to maintain the voltage, it will start charging the system. So this is the EMS, energy management system, which is connected with the forecasting of the load also, grid also, our battery management system also, cooling also system, PCS, everything, and it will monitor the system, and accordingly charging discharging will be finalized. And according, that is the main thing, how the frequency and voltage of the grid to be maintained through the energy storage system. That is the major task to be done by these ESS तो basically. अगर सर अगर मान लीजिए कि जब ये 6 घंटे सोलर से चार्ज होना है, उस टाइम पर 4 घंटे की डिमांड आ गई लगातार बिकॉज ऑफ ए ग्रिड ब्लैकआउट, तो मेरा तो Yeah. चार्ज ही नहीं हो पाएगा प्लांट। वो जो ये भी एक सिनारियो है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि जब मान लो ब्लैकआउट हो गया तो उस टाइम इसके पास जितना है उतना तो देगा नहीं, वाट एवर जो है जितना कम देगा, उसमें क्या जितना रिक्वायरमेंट उतना नहीं दे पाएगा, लेकिन उस टाइम चार्ज ब्लैकआउट। नहीं हो पाएगा। हाँ ये चार्ज पॉइंट है तो, कि चार्ज नहीं हो पाएगा दिन में, अगर अगर चार्ज तो कैपेसिटी दिन में चार्ज नहीं है। सर चार्ज तो इसको उधर से होना है, सोलर वगैरह जो सिस्टम अपन लगा ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टैंड अलोन, जहाँ सोलर वगैरह या विंड जो अपन लगा रहे हैं उससे इसको चार्ज होना है। ग्रिड से तो जब जरूरत हो तो पावर देनी है, ऐसा है। और ग्रिड से चार्ज कब होना है, जब ग्रिड का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हाई हो रहा है, उस टाइम वो करना है। वो EMS के थ्रू सिस्टम होगा, उधर सोलर से भी कनेक्टेड है, विंड से भी कनेक्टेड है, ग्रिड से भी कनेक्टेड, देयर आर 3 सोर्स, बट EMS विल डिसाइड कि इफ ग्रिड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग या ग्रिड वोल्टेज मेरा बढ़ रहा है, इट विल उधर से बंद हो जाएगा, इधर से चालू हो जाएगा। यही तो उसका मेन फंक्शन है। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आई थिंक दिस विल क्लैरिफाई सम बारू सर आंसर आल्सो। जो 1000 मेगावाट का 1000 मेगावाट ऑब्लिक 400 मेगावाट आवर का जो उसमें बोला गया है, तो 1000 मेगावाट इसमें पीक पावर, इफ आई 1000 मेगावाट मेरा जो है वो पीक है। राइट। फॉर दिस इज फॉर स्पेशली फॉर BESS सिस्टम। हाँ, तो अगर मैं कंसिडर करूँ तो अगर मेरे को किसी टाइम ग्रिड से डिमांड आ गया कि वी नीड 1000 मेगावाट, तो पूरा ओवरऑल डे का जो रिक्वायरमेंट होगा दैट 1000 × 24, इट मीन 24,000 मेगावाट का पावर रिक्वायरमेंट होगा मेरे पूरे दिन में। नहीं नहीं नहीं, पूरे दिन का नहीं है ये। दिस इज मैक्सिमम लिमिट इज ऑन कि 1000 मेगावाट फॉर 4 आवर्स का स्टोरेज। अब वो कम रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे 200 मेगावाट हो गया तो वो आपका ज्यादा आवर्स के लिए बैकअप मिलता रहेगा स्टोरेज, ऐसे। तो जो 1000 मेगावाट है वो मेरा किसी एक और टाइम आना चाहिए। कभी जरूरत भी नहीं हो सकता, आइडल भी हो हाँ, सकता है। मतलब आपका चार्ज पड़ा हुआ है, देयर इज नो डिस्चार्ज इज देयर, मतलब मिनिमम इट इज एज्यूम दैट इसका एटलीस्ट मतलब वन ये है, डिस्चार्जिंग विल अगर बी। सर बता रहे हैं, सर का कहना ये है कि अगर 5000 मेगावाट का अगर डिमांड है तो वो मतलब डबल टाइम लगेगा, 4 घंटे की जगह 8 घंटे काम करेगा। करेक्ट करेक्ट, हाँ, स्टोरेज टाइम बढ़ आई जाएगा। अंडरस्टैंड। नहीं सर, वो तो क्लियर है, बस मेरा क्वेश्चन है कि जो पावर डिमांड चाहिए होगा इस सोलर से इस 4000 मेगावाट आवर को फुलफिल करने के लिए, वो कितना होगा? वही तो कैलकुलेट किया ना नीचे। चलो और आगे, और इसको आगे देखते हैं, और थोड़ा 1-2 स्लाइड और देख लेते हैं, हो सकता है उसमें समझ में आ जाए अपने, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट फॉलो अप कॉल जो होगा उसमें अपन इसको करेंगे। ये स्लाइड को नोट कर लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ये सही है सर, ये स्लाइड में जो आपने दिखाया ना कैलकुलेशन कैलकुलेशंस सही है। तो सही है, अरे कोई कैलकुलेशंस बात नहीं। इज करेक्ट। या ये मैंने क्या है कि अभी व्हाट आई हैव स्टार्टेड, मैं एक एज्यूम कर लिया मैंने, RFS डॉक्यूमेंट एक ले लिया है, दैट इज अगेन 2000 मेगावाट ISTS कनेक्टेड सोलर PV, ओके, नो विंड इज देयर, विथ 1000 मेगावाट oblique 4000 MWH energy storage system in India under tariff based competitive bidding, SECI ISTS, this is the number, okay। So मैंने एक केस स्टडी पकड़ लिया है इस डॉक्यूमेंट को। मैंने आज अपन कुछ स्लाइड्स का डिस्कस करेंगे, और फर्दर जो नेक्स्ट टाइम होगा उसकी बाकी, और क्योंकि ये RFS डॉक्यूमेंट इज वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट और देयर आर मेनी अदर थिंग्स आर देयर, वी नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ओके। सो बिल्कुल पॉइंट वाइज आई एम टेकिंग एवरीथिंग, कोई भी चीज छूटे नहीं, ठीक है ना। टेंडरिंग का पूरा प्रोसेस शुड बी क्लियर, एंड ऑल टेक्निकल डिस्कशन
लाइक जो इंटरेक्टिव सेक्शन जैसा आज रहा, इस टाइप का सेशन ही अपन रखेंगे, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग अपने बने उसके लिए। तो अब आप इसके अंदर देखिए, ये देखो, इसमें एक 2000 मेगावाट एक अलग चीज आई, और वहां एक चीज आई 1000 मेगावाट। यहाँ आपका एक कंफ्यूजन दूर होगा। वो 1000 मेगावाट जो मैंने वहां से लिया था, अब यहाँ आया समझिए, ये जो मैंने यहाँ पे 1000 मेगावाट 4000 MWH उठाया है, वो मैंने खुद ऐसे इसलिए बनाया जानबूझ के ये चीज, क्योंकि ये मेरे दिमाग में आया था कि यहाँ मेरे को 2000 मेगावाट ही डिलीवर करना। दिस इज माय कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी विच आई हैव डन इन द पीपीए विद द सेकी, और मुझे आईएसटीएस में कनेक्ट करना है। तो उस केस में यू हैव टू डिलीवर 2000 मेगावाट, वाइल बीएसएस की रेटिंग क्या आ रही है यहाँ पे, 1000 आ रही है। अब मैंने वहां पे क्या लिखा है कि आपको 3300 मेगावाट डालना पड़ेगा सोलर सिस्टम, तब जाके आप कंटिन्यूस 2000 मेगावाट भी दे पाओगे, एंड यू कैन चार्ज योर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दिस बीएसएस टू डिलीवर 4000 MWH व्हेन रिक्वायर्ड। ये आप लोगों को थोड़ा आया इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन क्या है? हाँ, मीन्स एनीवन? मीन्स यस आई अंडरस्टैंड। आप बोल रहे हो कि अगर हम जो वहां पर कैपेसिटी आया 3300 जो आया कैपेसिटी, वो अगर हम लगाएंगे दोनों काम हो जाएगा। 2000 हाँ, मेगावाट वो का आपको सोलर पावर भी आपको डिलीवर हो जाएगा, यस 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 2000 और मेगावाट भी आपको डिलीवर करना हो तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका। तो यू हैव टू हम्म। डिलीवर 2000 मेगावाट पावर आपको वहां पे देनी है ग्रिड को सर, एट ये द सेम। 2000 मेगावाट का जो पावर है, ये क्या है? ये मेरा पिक पावर है कि किसी एक टाइम 2000 हाँ, मेगावाट यूज एसी, करेगा? और 2000 मेगावाट एसी, सिंपली 2000 मेगावाट एसी इज द जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे आपको ग्रिड में पावर डालना, वहां पे 2000 मेगावाट आपको डिलीवर करना है। एसी पूरा दिन में सर? अरे यार, पूरा दिन वाला नहीं से मीनिंग नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये ना, 2000 मेगावाट एक कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी तो होगी मैं यहाँ प्रोजेक्ट पर की। सर दो चीजें हैं, एक यहाँ है पे दो सोलर चीजें का हैं। प्लांट है, यस हाँ, और यस। एक है बेसिस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग नहीं है, ये है ऐसा टेंडर है जिसमें विथ बीईएसएस है। हाँ, विद ओके। बी दिस एस एस, राइट, टेंडर मतलब इज उस तरीके से। सोलर सही सही। प्रोजेक्ट विथ राइट बीईएसएस। ये समझो, राइट राइट पहले राइट। अपन ने डिस्कस किया था दैट वाज केरला वाला, वो ओनली स्टैंड अलोन है, उसमें कोई सोलर का हम्म, कोई प्लांट वगैरह नहीं दिया, वो आपको लगाना है। आप सोलर हाँ लगा हाँ के चार्ज करो या विंड लगाओ, ग्रिड से करो, क्या करो जो भी है, वो ग्रिड से करोगे तो फिर अगर आपको लाइसेंस तो लेना पड़ेगा अगेन। सिंपल फंड है, ग्रिड से अगर आपको पावर लेनी तो आपका वो क्या बन गया, प्लांट बन गया, वो दैट इज योर प्लांट, तो आपकी फैक्ट्री होगी। वो जो बीएसएस होगा वो आपकी एक फैक्ट्री हो गई, उसको उससे पावर लेना चार्जिंग के लिए, तो अगेन आपको वही पूरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रोसेस जो है वो वही रहने वाला है, वो जितनी यूनिट ग्रिड की लगती है वो लगने वाली। तो सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे आप सोलर लगा रहे हो, बट सोलर के साथ यू दिस द एनर्जी स्टोरेज जो है उसकी बीएसएस की रेटिंग है दैट इज 1000 मेगावाट 4000 MW। अब इसको आगे समझते हैं। ये एक आरएफएस का नंबर है, 31 जुलाई का है, आप भी देख सकते हो, नंबर भी लिखा हुआ है, टेंडर सर्च सारा लिखा हुआ है। इसकी की एक्सट्रैक्ट आई स्टार्टेड टेकिंग। तो क्या है, आपको एक तो पहले क्या है कि वंस आरएफएस डॉक्यूमेंट इज रिलीज, तो विद इन 20 days bidder has to report to SECI, okay, in case of any discrepancy in the document। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, then you have to report them। साइट साइट सेकी की हो सकती है, आईएसएन, मतलब ये जो अलग अलग वेबसाइट है बेसिकली सेकी की है, उस पर यू कैन डाउनलोड, और आईएसएन ईटीएस है। दिस विल बी मीन्स, दिस विल प्रिवेल मीन्स इफ मान ला देर इज ए डिफरेंसेस इन द डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ इशू है या कुछ डिफरेंसेस इन द डॉक्यूमेंट, मे बी सी ट्रिपल पी लाइक दैट, एंड आईएसएन ईटीएस है एंड सेकी वट एवर, आप तीनों में जगह देख रहे हो या डॉक्यूमेंट में कुछ डिफरेंस है, तो आईएसएन ईटीएस जो करके है ये आपका प्रिवेल करेगा, मतलब दैट विल बी द फाइनल डॉक्यूमेंट, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाए। ठीक है, सिंगल और टू बिडिंग होती है, तो सिंगल और टू बिडिंग मीन्स एक ही बार में हो, एक सिंगल स्टेज पे कर देने का, तो वो आपका सिंगल बिडिंग हो गया। ठीक है, वो नीचे मैंने इसको किया है। और टू बिडिंग मतलब फाइनेंशियल बिडिंग एक बार कर रहे, टेक्नो कमर्शियल एक बार कर रहे हो, देन वो वाला बाद में कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो है। और सिंगल बिडिंग में दो एनवलप अलग अलग जाते हैं विथ टू एनवलप, बट एक ही बार में आपको करना है। टाइप ई टेंडर या मैनुअल हो गया। आरएफएस डॉक्यूमेंट फीस 50,000 में नॉन रिफंडेबल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। Bid processing fees in this case also is 20 lakh, okay, maximum, and 20,000 per megawatt. And EMD, this is a bank guarantee 1 lakh 16 lakh 24,000, and PBG applicable. All dates as per NIT, okay, and portal IS and ETS.
Reverse action successful bidder will be informed via email. Who are the successful bidder in the technical this commercial feasibility initial? They can be only emailed for the reverse action. डाउनलोड आरएफएस डॉक्यूमेंट ये आपको लिखा हुआ है सारा जो दीज आर द आईडी ISN ETS portal w2bharatelectronicsstandard.com and SECI you can download. PPA for 25 years and with SECI on BO build on operate basis. Fiscal incentive bidder can avail. ये we have to avail. मतलब वो SECI is telling कि you can avail whatever the applicable accelerated depreciation, concessional custom and excise duties. Like if you are importing, or if there is some concessional custom or excise duties is there, especially for BESS, whatever other solar modules or whatever, you can leverage that facility. Tax holidays is applicable for such projects. Any solar power developer already commissioned, there is a condition in this document. If you have already commissioned under construction any solar project, that is also can be considered. They can also participate. बट उनका जो क्या होगा का बेनिफिट क्या मिलने वाला एक्सटेंशन ऑफ पीपीए जो होगा वो हो सकता है ड्यूरेशन बिटवीन द शेड्यूल कमीशनिंग स्टार्ट डेट एंड एक्चुअल कमिशमेंट ऑफ सप्लाई मीन्स if you are already constructing or already commissioned but you are not tied with any grid, in that case you can participate in this bid, and what will be the benefit? The PPA will be extended. If your supply you have start earlier and actual scheduled commissioning start date will be later, what will the difference? That will the your PPA will be extended for that duration. No separate CFA, central financial assistance separately for this. There is no CFA. A single stage two envelope bidding procedure. What is a single stage two envelope bidding procedure? Means one is that first envelope means single stage. In single stage, both to be submitted in one time only. First is the techno commercial bid, that is content technical details, compliance documents, and eligibility criteria like bidder qualification, project design, certification, EMD, bid processing fee, etc. Other envelope is the financial bid, contains the financial offer, any tariff, what rate you are quoting per kWh. For BSS tender, it's come around 3.5 rupees per kWh. For solar, it is coming around 2.5 to 2.54. But for with BESS, it is coming, solar with BESS, it is coming around 3.52. Okay, only those bidders qualified techno-commercial bid. Whoever win this techno-commercial bid, means the first one, this envelope is opened first. If you pass this one, then only you come for the financial bid. It is open, otherwise not. If you are not eligible, there is no need. If your rate are lower, you have quoted lower rate, but there is no use. If you are not eligible, or you have not deposited EMD or other things, RTGS or check through check you have to deposit. Must register registration bharatelectronicsstandard.com. Okay. Power evacuation infra like EHV line, grid side bay, pooling substation, all these things are all balance of system to install the BSS or other. If you are in this solar project, or if you are there are two delivery point at both places, or connectivity approval, all these things to be done by this developer, solar power developer, to point of intersection of ISTS pooling station, I mean PGCL substation. PGCL substation, that is called pooling station basically. We said pooling substation, they said pooling station. Land, solar PV and BSS technology, agnostic. Agnostic means you can decide your own. There is no criteria that you have to follow the DCR only. For this tender, I am only talking, means domestic content requirement is there, that ALMM is there, nothing else. Whatever the technology you have to follow the criteria, financial, technical criteria, and regulatory criteria of this RFS document, as well as the normal other like CIG, that is the statutory requirement that we need to do. That specification should be there. Grid code with grid other grid connectivity at ISTS, CTU, I interested.
raised to you by self, means solar power developer. SECI will focus on outcome, meeting bid financial, technical, and regulatory. If you are meeting regulatory criteria, technical criteria, and financial criteria, you need not. SECI will not think of. You need. They are less bothered about what the technology you are taking, where you are taking the land. That your headache. Okay, because you have to meet the outcome, means whatever they have said, if you have to deliver that power in the peak hours, so that you have to deliver, otherwise there is a penalty simply. ESS of at least zero point 0.5 megawatt oblique 2 MWH capacity for 1 megawatt project capacity shall mandatorily be installed as part of the project. It is minimum requirement. ESS can be, means what it is, means 4 hours backup. Again, it is coming the 4 hours, 1000 megawatt oblique 4000 megawatt hours, or zero point 0.5 megawatt oblique 2 MWH. Ultimately, this is again 4 hours battery storage is there. For 1 megawatt project capacity shall mandatorily be installed as part of the project. ESS can be from third party. You can procure from any, means any third party also you can procure. You need not to install at your level. Okay, you can purchase power from them, but power from solar power only, means there is a condition. This energy storage system, whatever the energy storage system you are using, that should be powered from the solar power only in this bid, because this bid is solar power plus ESS. Okay, not other power. ESS technology can be changed during PPA period with due intimation to SECI. We can change the technology also in between. Minimum quantum of contracted capacity of 50 megawatt and maximum quantum, that already know, we know minimum 50 megawatt. Okay, in the multiples of 10 megawatt, it is minimum required in case of ISTS connector. Maximum quantum of 1000 megawatt in multiples of 10 megawatt, including all group companies in a single bid. But there are different companies if are bidding, then total cumulative should be maximum quantum of 1000 in multiples of 10 megawatt. Any group company shareholding more than 10% but less than 26%, then disclosure to be submitted. This is the financial terms. Multiple delivery point with ESS, energy storage system, can be co-located. For example, 500 megawatt 2000 MWH and 500 megawatt 2000 MWH at two locations. We are installing separate delivery point. Power irrigation is separate substation, separate line, separate state also. Or 500 megawatt 4000 MWH and 500 megawatt without ESS. That also we can do. At least wherever ESS we are installing, this solar system should be there. Excess capacity can be installed, but SECI will allow only contractor. Delivery point can be changed up to the deadline of financial closure. Schedule commissioning date of the proposed new delivery point is on or before 31st December 2028. This is specifically for this RFS document. Okay. If you are changing the delivery point, then its commissioning date should be on or before the earlier delivery point. When during the bidding time, if you are mentioned there. Apply for connectivity for new delivery point within 7 days after intimation and approval by SECI. Schedule commissioning date of new delivery point should be on or before the earlier one. No extension for timeline to be allowed if solar power developer SPD failed to apply for connectivity in given time. Means if you are changing delivery point and within 7 days you are asked after approval by SECI to apply for connectivity, and if you are failing that one, then further if the project execution delayed, then if you are applying for extension, it will not be given. That is written in this RFS document. These are the penalties. That is not for this one, but just like you can understand. This is the, you can see, January to December month. Energy supplied by SPD million units. Okay. Hours other than peak, normal hours. This is during peak hours. How many million unit every month is supplied. Now minimum energy condition is there during peak hours. You have to
give this million units you have to provide during peak hours. Now shortfall, because 4.34 you have to do, you have to supply, but you have supplied only 4.17. So shortfall is 0.17. Now penalty will be there. This is the total. How penalty will be calculated? See here. The minimum energy supply required during peak hours is defined in terms of monthly or annually capacity utilization factor. Like shortfall, minimum energy to be supplied during peak hours minus actual supply, whatever I difference. For example, penalty will be 1.5 times. Simple. 1.5 times will be the penalty. This is a factor is chosen specially. Then tariff. Sir, one thing, sir, what does it mean here? Peak hours. Peak hours means it is in the RFS document it is defined. It means non-solar time is the peak hours. Like in daytime after 11 or you can say after 9 a.m. to up to 6 p.m. is the or 5 p.m. or this is the solar hours. That is not the peak hours. Peak hours is before in morning and in the evening time. That is called peak hours means when demand is high and generation is less. Duck curve you have seen na duck curve means when our solar duck curve is different type but peak hours is there when solar non-solar hours is the peak hours. Simply you can understand like that. Okay, when solar is there in daytime, wind is already 24 hours, but solar is there. In hydro also in 6 months you can see there is no generation. So non-hydro time again it is also peak hours. When hydro is there, the hydro generation is also meeting the demand. So, In that okay, case, so there what is I understand, hmm. so if my generation is less and my demand is high, then we can say it's peak hours. Yes, yes. Peak hours means simply that grid demand is high, means like factories all are running, but generation is not there. In night, you can say in Hmm. evening time. Okay, in night. Okay. So this is a calculation basically 1.5 times what is the tariff per kWh and short pile energy in million units, and this is multiplied by 10 lakh. Okay, same short pile in other than peak, same condition. This is calculated like that. Okay. A example you can understand. Contracted capacity 100 megawatt, for example, tariff 2.75 per kWh, annual CF committed by the bidder 25%. ESS capacity is all 50 megawatt, 200 MWh. Total annual energy supplied during peak hours 51.91 million unit. Minimum annual CF required 186.2 million unit as per calculation in the RFS. Okay, this is the minimum requirement as per the CF committed. Okay, now shortfall for peak hours we have calculated the sol power this shortfall. This is coming 6.7 million unit. Apply penalty formula. Penalty for shortfall in peak hours. Only peak hours it is calculated. 1.5 times 2.75, 6.77 million unit. This is the shortfall units basically. Okay. So multiply by 10 lakh. Total 2.795 crore is the penalty. So we need to understand this one. Before deciding the site, technology, and everything means the BSS technology as well as our solar technology. We need to see all these things and what capacity we need to install. That design to be done. Penalty for other hours is also there. Okay, non-peak hour it would be calculated using the same formula. These are the BIS international standards for BSS. Okay, yeah, I will provide this sheet to you. Sir, one thing I wanted to ask. Yeah, Basically, insurance is there for everything like, natural calamity or a lot of things. So any force insurance majeure. is there against penalty? Penalty can be No, no, covered under any. no. What that is the insurance is for the damage or force majeure. Any calamity is there for that one. If your system is not working due to like strike is there, some political strike is there, or some flood is there like that. In that case, it will be like water is flooded in the solar plant and you are unable to operate. At that time, there is a waiver. Otherwise, not.
Okay, if you are saying the radiation is not proper, yeah, we have not designed the system properly, yeah, efficiency is less, whatever the battery technology or BSS you have chosen, that is your fault. Or site, site visibility, non solar states are there, like you have selected other state. Karnataka is best, for example, yeah, Rajasthan is best for solar. You have selected some other state. Site also, it depends on the site also. O&M also, operation and maintenance, how you are maintaining the system. Okay. These are the IES standards, which are basically for UPS. Still, for dedicatedly BESS, there is no standard developed by the BIS, but I think it is under development. The standard pertains to UPS system with ratings up to 10 kVA, outline safety requirement. Same 16221 is for inverters, particularly those used in the photovoltaic system. For inverter and UPS, we have the standard. But these are the IAC, means safety requirement of stationary energy storage with this BESS system with lithium batteries. So we are also following right now these standards. Safety requirement for low battery system, standard for energy storage system. Okay, under these are Bhavani the sir, I have some questions. Can I ask? yes, Okay. yes. बोलिए. Okay, okay, sir. First question is, ये can I ask in Hindi or English? Which अरे language? जो जो बोलो वो अच्छा, अच्छा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये सर्टिफिकेशन का लिस्ट जो आपने दिया है ना, ये मुझे बताइए, ये सर्टिफिकेशंस अपने प्रोडक्ट के लिए मैं कहाँ से ले सकता हूँ? मतलब जो सप्लायर रहेंगे वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, या मुझे आईसी यूएल ये सबसे नहीं मुझे नहीं, बात करनी पड़ेगी आपको नहीं अपने? लेना है. आपको नहीं लेना है. आपको जहां से परचेज कर रहे हो आप, वो ओईएम जो भी है हम्म, उसको बोलना पड़ेगा यू हैव टू कंप्लाई दिस स्टैंडर्ड. आपको उसको बताना पड़ेगा. तो वो खुद बताएगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कंप्लाई करता है. ठीक है. और फिर इस स्टैंडर्ड के आप जाके स्टडी कर सकते हो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड. तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल उसमें हो रही होगी. वो वैसे गलत तो लिखेगा नहीं. ठीक है ना. हाँ वो सर, हाँ आईएस का तो मैं जान रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड. ये आईईसी इसका एंड आई यूएल क्या है सर? ये इंटरनेशनल है ना. आईईसी एंड इलेक्ट्रो यूएल. कमीशन है आईसी ओके, इलेक्ट्रिकल. इंटरनेशनल इलेक्ट्रो कमीशन, उसके स्टैंडर्ड. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. ठीक है. तो सर दीज ये आर इंडिया में अप्लीकेबल है ये इंटरनेशनल वाला? हाँ हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल. क्योंकि अभी हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेबिलिटी है ना. राइट नाउ वी आर इम्पोर्टिंग दिस बीएसएस वो सब आइटम. तो अपना खुद का नहीं. हम्म, अभी भी नॉट ओनली बीएसएस, फॉर अदर प्रोडक्ट्स हम्म, आल्सो वी आर फॉलोइंग बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स. जरूरी नहीं सारा केवल आईएएस का ही. आईएएस के साथ साथ वी आर आल्सो फॉलोइंग आईईसी. ओके, दैट आल्सो वी आर हम्म. फॉलोइंग. तो ओके, इंटरनेशनल ओके. स्टैंडर्ड सब जगह है. सब जगह वी आर. कोई अपना ये नया नहीं बीएसएस. वी आर व्हाट एवर द प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग, उसमें स्टिल वी आर मतलब बहुत सारी चीजें अपन खरीद रहे हैं. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आल्सो देयर. अभी हमने जैसे पीएमयू लिया था, उसमें भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. तो दैट शुड बी कंपैटिबल विद दैट. अच्छा सर, ये बीएसएस के लिए सर्टिफिकेशंस के लिए भी काम चल रहा है क्या इंडियन गवर्नमेंट में, या कुछ भी चल रहा है अभी? ये डेवलप कर रहे हैं ना. नहीं, वो उसी का बात चला. जो बीआईएस है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ओके. हम्म, हम्म, तो वो हम्म, उनका इनका चालू ही है काम. मतलब ये उनका अभी हाल फिलहाल तो ये जब तक इंडिया में जब तक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट होगा ना पूरा कंप्लीट, तब तक दे विल डेवलप द हम्म. स्टैंडर्ड आल्सो. ठीक है. सेफ्टी स्टैंडर्ड वगैरह तो है ऑलरेडी. लेकिन वो ऑलरेडी क्योंकि आपको सर ना मैंने ये आरएफएस डॉक्यूमेंट में देयर इज अ लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट इज देयर. हाँ, हाँ, हाँ. यू कैन सी दैट शुड बी कंप्लाइड बाय द बीएसएस. जो भी आप ले रहे हो उसमें आप देख सकते हो उसको. सर मैंने ये आपको टेंडर का लिस्ट देखा था. देयर इज सो मच सर्टिफिकेशन दैट इज आईईसी 62819, यूएल 98.3. देयर इज सो मच सर्टिफिकेशंस. तो तो आप मतलब अगर ओईएम से, हम लोग. हाँ हाँ ओईएम से बात करो ना आप. सर, अगर मैं सेल लेता हूँ, अगर चाइना से मैं सेल लेता हूँ, सपोज करो आरईपीटी का, ईवे का, या किसी गोसंस वगैरह का, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री में मॉड्यूल बना करके, पैक बना करके और रैक में असेंबल करके उसे मैं कंटेनर 20 फीट का कहीं से बाय करके उसमें फिट करने के लिए, असेंबल करने के लिए, तो सर्टिफिकेशन तो लेने लेने पड़ेंगे ना सर, क्योंकि चाइना से मुझे सिर्फ सेल का सर्टिफिकेशन मिल पाएगा, और बाकी हाँ का तो सर्टिफिकेशन मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा? बाकी जैसे आप मान लिया पीसीएस यू आर परचेजिंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ. ओके, यू आर असेंबलिंग. यही हम्म, होने वाला. वैसे वी विल असेंबल ओनली. हाँ, हाँ. यस, ठीक है. यस. इन्वर्टर वगैरह दे हम्म, विल बी अरेंज हियर. या जो रेक है, या फायर सप्रेशन हम्म, सिस्टम है, एंड देयर वेंटिलेशन सिस्टम है,
or you can say this बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो वी कैन से, तो ओनली जैसे आप बैटरी ओनली यू आर परचेजिंग, तो उसका आप ले लो जो भी स्टैंडर्ड है ओनली फॉर बैटरी विच इज एप्लीकेबल, दैट विल बी, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है किसी का कि ये आस्क क्वेश्चन इन द लेटर। ओके, अभी अपन जल्दी फिनिश ही कर रहे हैं, एंड में वी विल कीपिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। बट ओके सर। हाँ, तो वी विल कीप इन दैट टाइम। और एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का क्विज भी है, ठीक है। तो ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद यू कैन आस्क देम, है ना। बट अच्छा है, इंटरेक्टिव सेक्शन होना चाहिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। सॉरी सर, मैंने काफी क्वेश्चन पूछ दिया, सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, नथिंग इज सॉरी। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर बीएसएस, देखिए सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड आपके आरएफएस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन स्टडी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, आरएफएस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ये पावर कंडीशनिंग यूनिट जो कूलिंग वूलिंग का जो भी है उसके लिए स्टैंडर्ड है बीएसएस का। ग्लोबल प्लेयर्स कुछ लिस्ट बने लिखी है, ग्लोबल प्लेयर कौन कौन है बीएसएस में राइट नाउ, दीज आर द लिस्ट। ओके, टेस्ला, बीवाईडी, ओके, टेक, एलजी, एलजी के साथ जेएसडब्ल्यू भी कर रहा है कोलैबोरेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी के लिए। सैमसंग, एसडीआई, फ्लुएंस एनर्जी, नेक्स्ट्रा, है ना, पैनासोनिक कॉर्पोरेट, हिटाची, सीमेंस, एबीबी, दीज आर इंडियंस बैटरी प्लेयर्स। एक्साइड, अमर राजा, ठीक है, सुवास्तिका, हीरो, हीरो आर जस्ट collaborating, JSW is also collaborating with LG, Exicom, Tele System, ये PLI is nothing else, this is for solar PV model, wrong date. Okay, now she is there, 1 minute. Rayasri, are you there? Yeah, yeah, I am here only. You So, just put this the link of quiz at chat box so that all attend it within 10 minutes. Then we will do the question answer session and we'll close it. Yeah, yeah, I am dropping a quiz to the chat box. So please, this is for everyone. Please answer and submit your answer. Okay, thank you. Yeah, how much score you have received? That is important. Everyone has to attend it because based on that result only we will issue this one, means certificate. Yes, Hemraji, tell me. Yes, Mr. Hemraj. Ravi Kumar ji also raised hand. Yes. हाँ हाँ सर सर सर, आई हैव सम क्वेश्चंस। नहीं, एक थोड़ा क्विज कर लेते हैं, विद इन 10 मिनट इट विल बी कंप्लीटेड, इट ओके इज ओके ओके कंपल्सरी ओके because based on this result we will issue the certificate, because ultimately our certificate means this certificate of achievement, basically you are attending, whoever attended they have to attend this quiz also and submit the result. Based on that only the certificate will be issued. Pressary who are getting the marks above 7, they will receive the certificate. Okay. Yeah, sure.
Yes, sir. I have completed. Great. So what is your score? 9/10. 9 out of 10. Great. Only one question, but that I wrong that which Hmm. agency is providing certifications or whatever that. I have ticked that IEC, Indian Electricity Commissions, but that is another options. Okay. Okay. Actually, I am working in some companies, so that's why I have some knowledge about that. Good. Good. We will contact. You just share your numbers too. We will discuss. It is good. You are Yes, dedicatedly working for BASS. yes, I'm critically working from last 6 months, so that's why I have some questions like that I have asked to you. Then And it is good. I'm overviewing so much tender that you know about that juvenile for tender already opened. Okay, Seki tender. Okay, SJVN Satluj Jal Vidyut Nigam tender. Okay, so I have some interested in that part, sir. Yeah, yeah. Definitely, we will do another session on this one because still lot of things to understand. Yes, yes, sir. I think one more question, I think that LCOE means levelized cost of energy. I'm so confused about that, sir. Okay, so if you have any time, you can respond and you can respond to next meeting if you want. Sure, sure. It is very simple. You can call me one to one also. I will tell you. Or next time I will tell you. No, no worry. How can we get connected, sir? Hey, have you put this result to here in chat box? Yes, Whoever submitted result. yes, I have submitted. Yes. You put your result here, chat box. Uh, how can sir? A screenshot I have to send. No, 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 no. You just put I got received 7 out of like that. Okay, okay, okay. I got received 9/10. Yes, sir. I have Enthusiast sent. 7 out of 10. I'm Rajkumar 9 out of 10. Good. Bhavani sir, what is your mail ID, please? Yeah. Sir, what Power is the ground. pass marks? Pardon? Pass marks. At a minimum 7 required. Okay. After training, everyone should get minimum 7. Who will seriously attend, he can definitely get. So I am actually just pass. Yeah. No, no, no. 8 is good, na? No, seven I got, so 7. 7 is okay. You will get certificate. No worry. Sir, I have a question. Can I Yeah, tell me. ask now? Yeah, yeah, tell me. So basically the Come price, on, is it 10 out of 10. Very good. Yeah. Thank you, sir. Thank you. पूछिए भाई पूछिए क्वेश्चन आंसर हाँ सेशन सर, मैं चल रहा है ये पूछ रहा था कि जो आपने प्राइसिंग शुरू में बताई थी अराउंड 50,000 पर किलोवाट आवर, तो उसमें हम्म, अभी जैसे लिथियम बैटरी का लाइफ साइकिल 10 to 15 ईयर्स है, तो रिप्लेसमेंट्स वगैरह जो होते हैं उसकी अगर कोई कुछ कैलकुलेशन है अपने पास?
ओके, मीन्स जैसे 10 years नॉर्मल लाइफ है, तो मतलब वारंटी है 10 years की तो बैटरी के साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, अच्छा रीसेल जैसे करना उसके लिए। नहीं सर, ये जो टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट बैठेगी, उसमें हमने क्या कैलकुलेट करा ये फैक्टर रिप्लेसमेंट का नहीं बैटरी नहीं, का? वो नहीं किया, दिस इज ओनली कैपेक्स। वो जो वो जो कॉस्ट आने वाली है वो नहीं, इसमें कैलकुलेट नहीं किया। वो मिस कॉस्ट क्या ओपेक्स नहीं, में ये डालते हैं? नहीं वो किया है, जो आपका अपना को क्या बोलते हैं ना, ये जो इनकम आने वाली है वो तो अपन ने किया है, O&M कॉस्ट को जोड़ा है, और क्या रेवेन्यू अपने को आ सकती है या सब्सिडी वगैरह जो भी है वो भी ऐड किया है। बट ये जो आप बता रहे हो बैटरी वाला, ये नहीं किया है, इसको देखना पड़ेगा। तो पेबैक बैटरी की वाले को क्या? वो पेबैक की कैलकुलेशन में आएगा। सर एलसीओई का कैलकुलेशन शीट एक बार करके बताओ ना मुझे हम्म, प्लीज। क्या चीज? एलसीओई की कैलकुलेशंस मुझे थोड़ा मुझे करके बताओ प्लीज। एलसीओई मींस अरे वो लेवलाइज्ड लेवलाइज, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। हाँ कॉस्ट हाँ, ऑफ एनर्जी। लेवलाइज कॉस्ट में क्या है कि एवरीथिंग कंसिडर्ड हो जाता है। मतलब आप क्या है कि कोई भी चीज हो, स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी पैरामीटर्स है, हम्म। ठीक है ना, वो मेरे को पर हम्म। केडब्ल्यू लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी मेरे कितने आने वाली है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वी नीड टू कंसिडर ईच एंड एवरी फैक्टर, तब निकलती है ओके। उसकी कैलकुलेशन। हाँ यानी कुछ तो कैलकुलेशंस होगी ना सर, कैलकुलेशंस कुछ तो होगी ना, सर, कैलकुलेशन फॉर्मूला। मैं इसमें थोड़ा सिंपल तरीके से इनको समझाऊं सर। हाँ हाँ, समझो, चलो हाँ बोलो। रिजवान जी। हाँ, इसमें क्या है, आपको कैपेक्स और ओपेक्स ये दोनों कॉस्ट हम्म। टोटल, मतलब जैसे 25 साल के लिए आपका प्लांट है, तो 25 साल के लिए टोटल आपका जो खर्चा होने वाला है वो, और 25 साल के लिए आपका कितना मतलब क्या बोलते हैं कि एनर्जी जनरेट होगा, रेवेन्यू उन मतलब जो दोनों है। को डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा एलओईसी, मतलब लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपको फिर से बोलिए 25 प्लीज। साल, मतलब हम्म। टोटल कॉस्ट कैपेक्स और ओपेक्स दोनों मिला के टोटल कॉस्ट ओके। हम्म। निकालना है, और टोटल जनरेशन मतलब 25 साल के अंदर कितना जनरेशन आएगा केडब्ल्यूएच में। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आप उसको डिवाइड कर दोगे दोनों को, तो आपको मिल जाएगा पर अच्छा यूनिट अच्छा। आपका कितना क्या, यस यस। समझ गए? रिजवान जी मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बताऊं क्या? हम्म। हाँ सपोज करो कि मैं एक कॉस्टिंग कर रहा हूँ 1 कंटेनर के लिए, ठीक है, फॉर वो 5 मेगावाट आवर सोल्यूशन, क्योंकि अभी सेकी और जितने भी है वो 5 मेगावाट आवर हम्म। सोल्यूशन से इनको देने हैं। तो एक राइट। कंटेनर का आप मान लो 5 मेगावाट, उसे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो किलोवाट आवर के लिए, ओके। 5000। अगर आप उसे डॉलर से कन्वर्ट करते हो, डॉलर में लेके आते हो, तो अभी चाइना से जो प्राइसिंग चल रही है आई थिंक $60 to $70 पर किलोवाट चल रही है। इज इट ओके? है ना? तो उसे आप 60 से मल्टीप्लाई करके, अगर आप 84 से मल्टीप्लाई करोगे अपने इंडियन रुपीज में, तो हमारा 2 से 3 करोड़ रुपए एक कंटेनर के लिए आ रहा है, फ्रॉम द परचेसिंग फ्रॉम चाइना। ओके। आप इसे 3 करोड़ मान लो, 3 करोड़ 5 मेगावाट के लिए, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि सपोज करो हम मुझे 500 मेगावाट सोल्यूशन देना है, तो मुझे 120 कंटेनर लगेंगे, क्योंकि 500 के लिए आपको लेवलाइज करने के लिए आपको 20% बढ़ा के देना पड़ेगा, तभी आपको 500 मेगावाट मिल पाएगा। तो वो हमारे 600 मेगावाट सोल्यूशन आ पाते हैं। तो मुझे 120 कंटेनर मुझे चाहिए खरीदने के लिए। 120 कंटेनर का कॉस्टिंग चल रहा है अभी 300 या 400 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 400 करोड़ को एलसीओई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे रेवेन्यू भी मिल जाए, एंड उसका पर किलोवाट यूनिट में आपको टेंडर में सबमिट कर सकूं कि हाँ मैं मिनिमम टेंडर इतना के लिए सबमिट कर रहा हूँ। ये जो आपने कॉस्ट बताई अभी 60 to 70, ये मींस एक्स यूएफ लैंडेड कॉस्ट आपने बताई, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब आ गई है? नहीं नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी का तो ज्यादा आ जाएगी ना, तो 75 चली जाएगी। मैं बस बेसिक बता रहा हूँ। ये Tier 1 बैटरी के लिए आप बता रहे हाँ टीयर 1 बैटरी मान लो। मैं जैसे मैं भी आरईपीटी का बैटरी यूज कर रहा हूँ, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए। आरईपीटी का आप मान के चलो, ठीक है, या ईवे का मान के चलो, तो आपको मैं बेसिक एवरेज दे रहा हूँ कि अगर मुझे सपोज कॉस्टिंग चल रही है, मुझे 500 मेगावाट आवर के लिए कॉस्टिंग चल रही है 400 करोड़ रुपए। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो 400 करोड़ को मैं एलसीओई में कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि 400 करोड़ मैं सबमिट नहीं कर सकता टेंडर वाले को कि मुझे 400 करोड़ रुपए प्राइसिंग पड़ रही है, मैं 500 करोड़ रुपए में इतना करके दूंगा।
तो उसमें कैसे नहीं, करे एलसीओई कन्वर्ट, कैसे करे समझ में ये नहीं, मुझे नहीं आ रहा। उन्होंने तो प्राइसिंग मांगा है आपसे, वो LCOE में मांगा है प्राइसिंग। हाँ, एलसीओई में मांगा है। आप जब सोलर प्लस बीएसएस करोगे ना, तो ये एलसीओई में हाँ प्राइसिंग हाँ। के लिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये सेकी में जो 2000 बाई 4000 का बीओ मॉडल था आपको, ठीक है, पिक मैनेजमेंट के लिए, ये टेंडर हम्म, अवार्डेड किया गया है आपको रिलायंस को, ब्लू पाइन को, एचएफई को एंड हम्म, एनटीपीसी को। उन्होंने क्या अच्छा। बिड किया है, 3.52 रुपीज पर किलोवाट टू 3.53 रुपीज पर किलोवाट, मतलब आपको L1 L2 L3 बिडर के लिए। इसमें आपको हम्म। चार आपको पार्टिसिपेंट ने वोन किया है। तो उनकी प्राइसिंग थी 3.52 रुपीज पर किलोवाट आवर, ओके, फॉर नहीं, बीएसएस। वो अलग है, वो LOEC नहीं है भाई। वो जो उन्होंने जो बीट ओके। किया है ना, वो हम्म। LOEC नहीं है। LOEC अलग है, और वो जो रेट वो कर रहे हैं ना, वो PPA रेट है। वो KWH का PPA रेट है। वो और LOEC को आप अच्छा, ये कंफ्यूज मत करो, केडब्ल्यू। दोनों अलग अलग चीज है। ओके ओके। हम्म। अच्छा, एलसीओई में कौन सा टेंडर में ये लग रहा है अभी एलसीओई का? मुझे नहीं लगता किसी में आपको ये कॉस्ट मांगा होगा। मतलब LOEC मुझे नहीं लगता कोई मांगता है। वो तो हमारे कैलकुलेशन के क्योंकि लिए होता है। मतलब प्रोजेक्ट हम्म विजिबल है कि नहीं है फाइनेंशियली, वो देखने के लिए होता है। अ, मतलब हम्म। उसका पेबैक, ROI, ये सब मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में आप जाते हो ना, कि मतलब जो ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट है, उसको ये प्रोजेक्ट मतलब विजिबल है कि नहीं है, उसके लिए उस टाइम पे ये LOIC और ये सब कुछ देखा जाता है। मतलब LOIC सोलर का इसलिए देखा जाता है कि वो मतलब कंपेयर टू दूसरे प्लांट है, जैसे सोच लो कि विंड है या तो फिर थर्मल है, तो उनका LOIC इसके साथ हम्म सोलर का LOIC कंपेयर होता है। तो उस टाइम पे देखा जाता है। और आप जो बात कर रहे हो ना, वो पर हम्म। KWH PPA रेट की बात चल रही है। वो दोनों बहुत ओके ही ओके। अलग चीजें हैं। अच्छा, ये सॉरी रिजवान जी, एक क्वेश्चन से मेरे, जैसे जियोविनल का टेंडर में एक जेंसॉल ने विन किया था आपको 500 मेगावाट के लिए। उसने प्राइसिंग दिया था 4.449 लाख पर मेगावाट पर मेगावाट पर मंथ। ये कैसे निकालते हैं? नहीं, तो वो क्या होता है कि मतलब उनका जो हम्म टेंडर था ना, जहां तक मुझे पता है, वो टेंडर ऐसा था कि हम्म। वो मतलब रेंटेड वाला था। कि आप वो लो हाँ, ना लो, रेंटेड वाला था। उनसे कोई मतलब नहीं है ओके। कितना ले रहे हो। उन्होंने जो फैसिलिटी बोला, वो फैसिलिटी उन्होंने बना के दे दिया। मतलब पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट उसको जैसे चाहिए यूज करे। मतलब उसमें से जितना एनर्जी लेना है ले, स्टोर करना है करे। उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया कि इतने पीक हम्म। पावर और इतना कैपेसिटी, मतलब बैटरी का। गवर्नमेंट उसको वो रेंट पे दे दिया उन्होंने, मतलब बेसिकली। यस यस, क्योंकि ये बीओ उसमें मॉडल था, जेंसोल का मतलब बिल्ड ऑन उसमें ऑपरेट। हाँ। जेंसोल को ज्यादा कुछ लेना देना है ही नहीं। मतलब कि वो एज ए रेंटेड फैसिलिटी मतलब हो गया कि उन्होंने एक प्लांट बना के आपको एज ए रेंट पे दे दिया। मतलब एक सबस्टेशन का बनाया, उस सबस्टेशन रेंट पे दे दिया कि भाई हम्म। 220 kV बाई 33 kV का, और 1000 MVA का एक सबस्टेशन बनाया, फिर वो रेंट पे दे हम्म। दिया। फिर वहां से कितना पावर आता है जाता है, वो कुछ उनको लेना देना नहीं है। बस ये हमारा सबस्टेशन है, आप यूज करोगे, पर मंथ आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। वो तो उस टाइप का दो टेंडर था। रिजवान जी, ये जिंसोल को तो प्राइसिंग के कैपेक्स तो पैसे लगाने पड़ जाएंगे ना, अगर वो सिस्टम खरीदते हैं लगाते हैं, उन्हें हाँ हाँ कैपेक्स हाँ, तो बिल्कुल। करना पड़ेगा। हेलो हाँ, रिजवान, कैपेक्स वो करने के हिमांशु क्या बाद भाई, ही तो होता है ये। वो। अभी हेलो, एक हाँ एक सर, हाँ सुन सर। सुन। मैं कह रहा हूँ ये अभी लंबा डिस्कशन है, राइट इसको राइट राइट। अपन 1 to 1 भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, वी आर क्रिएटिंग ए ग्रुप। ओके, ग्रुप पहले से बना हुआ, आई एम एडिंग देयर। ठीक है ना? तो वी विल डिस्कस देयर, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो गया ना, इट्स 9:30 130। अप्रोक्स। यस यस तो यस। अभी और मेरे यहाँ तो सर अभी 8 ही बजे है। कहाँ पे? अच्छा, ओमान में। तो यार तो डियर दादागिरी ये। रात काली कराओगे क्या यार? नहीं नहीं, आपका जब ये वेबिनार चालू हुआ तब मैं ऑफिस से निकल रहा था। तो हैं? मैं बोला चलो एकदम टाइम पे एक वेबिनार स्टार्ट हुआ है, ये इस बार तो पूरा अटेंड करूंगा। बाकी क्या होता है कि नॉर्मली आप जब करते हो तो दिन में करते हो, मैं ऑफिस पे रहता हूँ, संडे को भी मेरा ऑफिस चालू रहता है, तो मैं नहीं, अभी अटेंड नहीं तो करता। ये लेकिन एक और इस पे हाँ, फॉलो अप करेंगे। आज का लेकिन मेरे को बहुत मजा आया, क्योंकि पूरा का पूरा मैं अटेंड कर पाया, और भी बहुत रहा, बहुत कुछ जानने मिला। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही वैल्यू एडिशन वाला ये सेमिनार था, मतलब वेबिनार था। बहुत मजा आया सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो एक बार सब थोड़ा फोटो ले लेते हैं, थोड़ा सा सब खड़े हो जाए, मतलब इसमें आ जाए, दिख जाए तो खड़े तो क्या होंगे। एक बार क्या है कि सारे वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? अब वीडियो ऑन करना है। जस्ट मतलब वो एक एक मिनट सर जी।
मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर देता हूँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग दिस वन। राइट राइट। हाँ ये हुआ ना कुछ यार, ओमान से। राइट। ओमकार जी, गुड गुड गुड। तो क्या है कि एक वो ले लेना प्रेयर्स, एक फोटो ले लो इसका, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। तो संजीव जी, भगत, हेमराज जी, अच्छा आप तो काफी डिस्कशन कर रहे हो यार, आपसे और करना पड़ेगा अभी ऐसा लग रहा है। मेरे पास ये सही नहीं है अच्छा सर। है ये, मतलब क्या है कि नहीं नहीं, अभी इंडिया ये में है इसकी ना। काफी चलने वाली है ना, मुझे लग रहा है कि 1 से 2 साल में काफी हम्म। डिमांड इसकी आने वाली है, तो इस पे मैं अभी भी आरएनडी केवल कर रहा हूँ अभी। 40 10% तो अभी आने वाला मैंडेट मिनिमम ईएसएस वो। हाँ 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 हाँ। अदर हर C&I कस्टमर को भी लगाना पड़ेगा 10% मिनिमम। हम्म। हाँ, तो सिग्नल उसके के उसके बाद से अपनी यूटिलिटी के लिए भी काफी सारे निकल रहे हैं ना, तो काफी इसमें भी काम होना बाकी है अभी इंडिया में। यस यस यस। यस। चलो ये अच्छा हो गया कुल मिला के। और फर्दर और करेंगे, एक और करते हैं फॉलो वाला। ओके, दैट इज आल्सो हम्म। है ना। ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू ऑल। थैंक यू, बाय। थैंक यू। सर, सेशन करना तो इन्फॉर्म कर देना, अगर सेशन आगे आगे करोगे ना तो ग्रुप नहीं में नहीं, भी। एंड वो अपने। आप लोग जितने भी हो उन सबको वो गूगल मीट का लिंक आ जाएगा और शेड्यूल भी पहले ही बता दिया जाएगा। प्रायर श्री विल कोऑर्डिनेट। हम्म। हाँ सर, सर वो वाला जो मेरा है, जो अभी मैं कर रहा था, पर रुपीज पर मेगावाट पर मंथ वाला, उसका सेशन एक बार लेके हाँ, आना प्लीज। वो मैं आपको कैलकुलेशन बिल्कुल बता देंगे अब की बार। आपको एग्जैक्ट किसके लिए चाहिए, इसी के लिए चाहिए बी सोलर प्लांट के लिए, बीएसएस। बीएस नहीं नहीं, बीएससी। मुझे चाहिए स्टैंड अलोन बीएसएस के लिए, एंड प्लस सोलर प्लस बीएसएस के लिए, क्योंकि अभी इसी की डिमांड है ना। अभी ठीक आपने है जो ठीक है। देखा सीट दिखाया था आपने, या इसका हाँ हाँ सेकी का, हाँ केरला हाँ। वाला, वो भी आपको स्टैंड अलोन था मुझे लग रहा है ना। अच्छा हाँ, अभी तो ओपन है वो। राइट नाउ ओपन है, हाँ, सेकंड ओपन है ना। फरवरी को तो यस ओपन यस। होना। हाँ, 2 फरवरी को ओपन होगा। हाँ हाँ, तो सर उसका थोड़ा सा अगर एक कैलकुलेशन शीट बना लोगे ना, कि सपोज इसकी इतनी प्राइसिंग चल रही, इतनी प्राइसिंग चल रही है, इसमें कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा हम लोग को हेल्प मिल जाएगा सर। क्योंकि अभी ठीक है। ये इंडिया में भी न्यू है ना, तो काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। आप जितना बता पा रहे हो ना, उतना किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं 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 है नहीं, रियली में। वास्तव में बहुत अवेयरनेस यार, मैं खुद ही सीख रहा हूँ अभी, टेंशन मत लो आप। हाँ सर, मेरे पास तो तीन डायरी भर चुकी है लिखते लिखते इसके बारे में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग जीरो से ही किया था, अपनी कंपनी में फर्स्ट बंदा था। तो इसके अच्छा बारे में अच्छा। बेसिक से जाना, कैसे कैसे क्या हो सकता है, नहीं इट हो इज सकता इट इज है ए ये। क्या है, इट इज ए न्यू सब्जेक्ट एंड अभी क्या है, इसकी जो क्रिटिकलिटी है ना, कोई ज्यादा समझ नहीं रहा है, बस हाँ चल रहा है ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन इसका हाँ हाँ हाँ। ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इसका सेफ्टी रिक्वायरमेंट हम्म एंड हम्म इसका जो आपका चलो इंस्टॉलेशन तो इट्स नॉट बिग डील, लेकिन कमीशनिंग जिसको बोलते हैं, टेस्टिंग कमीशनिंग, वो सारी जी चीजें हैं, वो अभी आप जब लार्ज स्केल पे होने लगेगा तब आएगा। अभी तो हाँ ठीक है, सर, मेरे इम्पोर्ट कर पास रहे कुछ हैं। पीपीटी, मैंने कुछ पीपीटी भी बनाया है इसके ऊपर, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा सर, नो हाँ प्रॉब्लम, जी हाँ ठीक जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर हाँ, श्योर। पीपीटी आपको मतलब सेल से लेकर के कंटेनर कैसे बनाते हैं, पीसीएस सिलेक्शन कैसे करते हैं, है ना, सिलेक्शन अच्छा। क्राइटेरिया क्या है, तो वो मैंने पीपीटी बनाई है अपने लिए, ठीक है। तो अभी तो हाँ, वो मैं इसको शेयर कर दूंगा। हेमराज जी, जरा 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 हमें भी शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दिए तो हमें मिल जाएगा। प्रयास है कि एक हाँ ग्रुप क्रिएट है, उसमें सोसाइटी वाले ग्रुप में डालो, उनमें उसमें करते हैं क्या। एक वेबिनार हाँ ग्रुप है हाँ हाँ। हमारी, हमारी कम्युनिटी है, आप उसमें हो नहीं, आई डोंट नो। तो उसमें एक वेबिनार का ग्रुप बना रखा है, मैं हम हूँ मैं हूँ। उसमें ऐड करते हैं। हाँ आप होंगे तो पता ना उसमें सर, हम पाँच छह ग्रुप में एक, तो, 5-6 ग्रुप पे तो मैं ऐड हुआ हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे फिर को तो फिर देखना पड़ेगा, हाँ। नहीं नहीं, फिर ठीक है, फिर कोई हम्म मतलब किसी भी ग्रुप में होता है ना, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। किसी एक ग्रुप में होना जरूरी है, हम्म कम्युनिटी के किसी एक ग्रुप में होना जरूरी है, तब हम्म। आपको नॉर्मल लो आ जाता। अभी क्या हमने एक तो बना रखी कम्युनिटी, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक तो बनाई हमने कम्युनिटी बनाई है जिसमें 365 रुपीज रखा था। अभी उसकी फीस कम करके हमने थोड़ा कम कर दिया फीस को, और उसमें एफिलिएट प्रोग्राम भी चालू कर दिया है। एफिलिएट मतलब आप किसी को रेफर करते हो तो यू विल गेट 35% हम्म। आपके क्लिक को किसी, और जितने भी वेबिनार होंगे 1 साल तक वो सब फ्री। हम्म। ठीक है, जैसे अच्छा आप अच्छा। 199 आपने अभी दिया है, बट मेरे जितने भी हम्म। वेबिनार आने वाले हैं वो जिस दिन आप मेंबरशिप लेते हो, अभी मैंने शायद उसकी फीस 1199 करी हुई है, ठीक है। तो पहले हम्म 365 थी, फिर ये किया है, उसमें ऑलरेडी 44 मेंबर्स है अभी एज ऑन डेट। ठीक है, इनिशियल उसका 365 रुपीज था, उसके बाद अभी उसको 1199 किया, तो ये वेब बेस्ड भी बन जाएगी, वेब उस पर चली जाएगी। वो क्या है कि आराम से ये फ्री आपको मिलेगा, मतलब कहने वाला वेबिनार में पैसा देना ही नहीं, जितने वेबिनार होंगे 1 साल तक के लिए फ्री, ऐसा है।
और एक कहाँ कम्युनिटी। वो वाला लिंक कहाँ से मिलेगा सर, जो आप अभी बता रहे हो? वो वाला मुझे तो पता नहीं है अभी, मैं तो नहीं पहली नहीं बार नहीं, हुआ था यहाँ पे। वो है। अरे प्रायोरिटी, वो लिंक आप सबको भेज देना, इनको जितने भी नंबर थे ना अभी, सबको एक बार भेज देंगे वो, ठीक है। हाँ वो हाँ, अभी लिंक वो किसी से मेरी लिंक। बात हो रही थी ग्रुप में, किसी पर्सनल से, या प्रेसिडेंट थी या मुझे नहीं याद नहीं आ रहा है। हाँ आप हाँ मुझे हाँ। पर्सनल भेज देना प्लीज मेरे तो नंबर भेज पे, मेरा सब, नंबर तो आपके पास होगा। जितने भी कैंडिडेट आए उन सबको वापस भेज देंगे। ऑलरेडी जो मेंबर है उनको नहीं भेजेंगे, बाकी जो जो नए हैं उनको भेज देंगे। उससे क्या होगा कि आपको करना कुछ नहीं, आपके पास हर बार इंफॉर्मेशन आ जाएगी जब भी कोई वेबिनार होगा ना, तो यू विल अटेंड फ्री। हम्म। और उसके साथ आपको रिकॉर्डिंग भी हम दे रहे हैं और फ्री में। और साथ में क्या, कभी ये सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। और ईयर एंड में कभी हुआ तो वर्कशॉप भी रख सकते हैं, और जो अच्छे कंट्रीब्यूटर उनको अवार्ड भी देंगे हम। तो ये है, जैसे मतलब आप हम्म। क्वेश्चन पूछना और इसमें रिसर्च करना, ये भी एक अच्छी चीज है, तो वो भी हम हाँ कर सर, रहे हैं। हाँ सर। ठीक है। हम्म। और अभी 26 जनवरी को अपन क्या कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो नीडी है, जॉब सीकर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग ही फ्री देंगे। लेकिन उसके साथ हम कॉर्पोरेट से भी बात करेंगे, तो उनको जहाँ चाहिए तो उनको ट्रेनिंग दे के फिर हम भेजेंगे। मतलब ये हमारे से सर्टिफिकेट मिला होगा कि इसने इतने दिन की ट्रेनिंग ली है उनसे, ऐसा करके, तो हम्म। आपको जॉब मिलना भी इजी हो जाएगा। ऐसा भी कर रहे यस हैं। यस सर। दैट गुड। ये तो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है प्रायोश्री, यू कैन सेंड इस टाइप की जो भी कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, या फिर नेक्स्ट जो भी शेड्यूल है, दैट सी विल इंटीमेट यू। ठीक है। हम्म। तो नेक्स्ट सेक्शन कब रख रहे हो सर? अभी अभी जो पेंडिंग कुछ का था, ये, या अभी टाइम हाँ, लगेगा? ये अभी बताएंगे, अभी आपको बहुत जल्दी बता देते हैं ना हम, मतलब ये जल्दी रखेंगे। वी विल ट्राई विद इन अ वीक, ठीक है, मैक्सिमम। थैंक यस यू यस ओमकार सर। जी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। Close now this meeting. हाँ, या वी शुड क्लोज। ओके, ओके थैंक सर, यू। भवानी सर। हाँ जी, यस सर, थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा थैंक यू, बताया थैंक सर, थैंक यू, एंड यू। ओके, यू आर थैंक्स। वेरी हम्बल पर्सन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you all. Good night. Good night. All, thank you गुड all. नाइट, Bye गुड bye. नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट रिजवान, गुड नाइट संजीव, Good बाय। night. Thank you, sir.